across all units, Executive Director of Bank of Maharashtra, General Managers, Deputy General Managers, all Zonal Managers, Deputy Zonal Managers, AGMs. I welcome all of you for this 41st Annual General Body Meeting, which is arranged by Bank of India Officers Association, Pune Unit. Stand awake and not stop till the goal is reached को अपने जीवन का आदर्श मानने वाले स्वामी विवेकानंद हॉल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं सुजाता हटकर। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में हम सभी गणमान्य अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। सर्वप्रथम मैं कॉमरेड प्रभु देसाई जो अध्यक्ष है पुणे यूनिट के, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कॉमरेड नंद कुमार प्रभु देसाई। उसके बाद कॉमरेड अमोल सांगले से मैं अनुरोध करती हूँ अतिथि देवो भव, घर आए मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। मैं अमोल सांगले को अनुरोध करती हूँ कि वो संजय दास जी को पुष्पगुच्छ देके, शॉल और मोमेंटो देके उनका स्वागत करें। और एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एन दामोदरन जी आज हाजिर है। मैं कॉमरेड पंढरपुरे जी से अनुरोध करूंगी कि उनको मंच तक लाने में सहयोग दे। आज हम सब विजय कुमार जी आज हाजिर है। मैं सुधीर खरात कॉमरेड को अनुरोध करती हूँ कि उन्हें मंच तक लाने में सहयोग दें। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कितने एक्टिव है। ही इज फ्रॉम अवर बैंक ऑफ इंडिया फैमिली ओनली, ज्वाइन इन बैंक ऑफ इंडिया। कॉमरेड प्रमोद शिंदे जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि यंग एंड वाइब्रेंट लीडर हमारे जो नीलेश पवार जी है, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन और मुंबई गोवा यूनिट के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको मंच तक लाने में सहयोग करें।
मैं कॉमरेड प्रवीण बनगर से अनुरोध करती हूँ कि राजस्थान जोन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड महेश मीना जी उनको मंच तक लाने में सहयोग करें। आज जनरल मैनेजर हुड्डा सर नहीं आए, पर उनकी जगह पे डीजीएम डिप्टी जनरल मैनेजर पी ऑगस्टिन सर आज यहाँ हैं। मैं सुनील गवानी, कॉमरेड सुनील गवानी जैसी ये अनुरोध करती हूँ कि उन्हें मंच तक लाने में सहयोग करें। हमारे सबसे चहीते लीडर्स लीडर कॉमरेड सुनील कुमार जी, मैं जनरल सेक्रेटरी मडूल सर जी को अनुरोध करती हूँ कि वो सुनील कुमार जी को मंच तक लाने में सहयोग दें। ते आता कोणाला बोलायला ना अध्यक्षानंतर नाही आता पहिलं दीपप्रज्वलन ते सगळं झालं नंदू नंतर नंदू जर नेहमी पण झालं ना महानुभावों के मंचासीन होने के पश्चात संगठन की परंपरा के अनुसार दीपक प्रज्वलन एवं प्रार्थना होगी।
सभी मंचासीन अतिथियों को अनुरोध है कि वे दीपक प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। सारे अतिथियों को आपसे विनंती है दीपक प्रज्वलन करें। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। हे दीपक ज्योति, तुम शुभ और फलदायी हो, स्वास्थ्य एवं धन संपदा प्रदान करती हो, शत्रु बुद्धि का विनाश करती हो, अतः तुम्हें नमस्कार करती हूँ। I would request everyone to please stand up for the prayer. विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
Thank you everyone. I may now request Comrade Nandakumar Prabhudesai sir, President Bank of India Officers Association, to welcome and address our comrade colleagues. Good morning. Once again, I welcome all my beloved comrades from Pune unit. Really, it is an overwhelming thing for all of us that it is unprecedented present today in this August Hall of Swami Vivekananda Hall, and many more comrades have already come from all the places, and this we are saying that this hall is very much packed. So today we have gathered here for the 41st annual general body meeting of the Pune unit in this very beautiful auditorium, that is Vivekananda Hall of MIT. I take a pride and privilege as well as very happy and honored to preside over this unit, this Pune unit, as well as being a president of this AGM today. I welcome all the respected dignitaries on the dais, of the dais. First of all, I welcome all my beloved comrades for whom this AGM is always held. They are the prime members of our unit, and definitely I welcome all of them wholeheartedly. Next, I welcome our respected President of Bank of India Officers Association, Federation of Bank of India Officers Association, and General Secretary of Eastern India branches, Comrade Sanjay Das ji. I would like to welcome Comrade Nilesh Pawar ji, who is a working president of the Federation of Bank of India Officers Association and General Secretary of Mumbai and Goa unit. He is then, as a special guest, we can say that the General Secretary of Rajasthan unit, Mr. Comrade Mahesh Meena. I also would like to welcome him. I would like to welcome a special guest, special two guests. That is our ex-executive director, Sri N. Damodaran ji, who has accepted our invitation and graced this occasion. So I'll welcome him also. And at the same time, many of you may not Pune only. And our earlier general manager and a friend of our beloved General Secretary Sri Sunil Kumarji, our Vijay Kumarji. So I welcome from the bottom of heart. At the same time, I welcome our respected DGM P. Augustine ji. He has also graced this occasion, so I welcome. And all beloved and very vibrant leader of leaders, General Secretary of Bihar unit, advisor of AIBOC, who plays a very, very pivotal role, and you have experienced that he has played a vital role in the last settlement, wage settlement also. Our beloved leader, Sri the Comrade Sunil Kumarji, Gausani ji, DGM Audit, Sri Dwaga ji, then our Deputy Zonal Manager of Pune unit, Sri Upkari Saab, then our, as well as our LCB, DGM LCB, yes, Mr. Comrade Mali Saab, and all my our DGM deputies. At the same time, our former president of Pune unit, Katti ji,
our SC/ST Federation's leader, Sri Gudaskarji, our former executive committee member, Sri Dilip Kambleji, Ramesh Kambleji, and all DV judges and photographers who are also playing a very important role for this meeting. I would take this opportunity. We have to understand, we have to know the history. So our leaders who have toiled and they have given they sacrificed their career for the betterment, their involvement, attachment and their dedication. That is why our Pune unit is being regarded as a very vibrant unit in the eyes of the Federation. This legacy we have to carry out, our militancy, our discipline in administration as well as in the financial. That is more important things, and that we are carrying out the legacy hereafter also. Yes. Retiring and what you call that, the affairs of our association as well as the bank is going to in the hands of our new DROs also. So this legacy should be continued, and I know that the young brigade is very much capable of taking care of the bank as well as the association. It was my mistake, or pardon me, that I forgot to welcome our special guest, Mr. Ganesh Pandey. Comrade Ganesh Pandey is the treasurer of our association, as well as the Rajesh Kumar, who has also come from, specially from Bihar, to grace this occasion. It is evident from the fact that the members are having faith and belief in the association, and leaders, after seeing this August gathering, definitely this is actually rainy season in this area, but even then, so it's a rainy season also, and but rain is not there, but even then you have made it a point to come for this executive committee meeting, annual general body meeting. I forgot to mention the name of Ashish Tekale, president of Vidarbha unit. In fact, I should not have forgotten him, because he was there with us since yesterday, and executive committee members from the Mumbai unit also. So I welcome all of them for this annual general body meeting. All of you will vouch me if I say that our organization is very strong under the able leadership of our Sunil Kumar ji and Sanjay Das ji and all our federation leaders. Here I would like to cite only one or two examples. There are many more examples we can quote, but the two examples I will cite. That last settlement which was concluded just because the interference of our working president, Sri Comrade Nilesh Pawar ji, and we are having a very good hold now after retirement. Also he is advisor of the AIBOC. So you can understand how our organization, our own organization is 8th of May, when the IPO, LIC IPO was declared, and all banks were asked to remain open on the Sunday, but at the one instructions of our Sunil Kumar ji, no branch was open on that day. That is the strength of our leadership. And here I would like to support, and they take the onus of that, whatever they, but no one should understand, no one should feel that it is a holiday. Everyone should come on the street unless and until we fight. Just I will touch upon one thing. All the three signatories of our settlement. Sanjay Das. Yes, okay. Thank you for correcting me. For the last 10th joint note, all the three signatories up to 85 you can say. So in those years, since the branch expansion program was on the rampant basis, and due to the nationalization, for the nationalization we must give credit to our then Prime Minister Indira Gandhi ji, and that is why we got the opportunity to work in this bank. So recruitments were on the larger scale, the branch expansions were going on,
But after 85, there were no recruitments in the banking industry till 2010, except DROs were recruited in 1995. In those days, the banking was confined to only very limited business, that taking deposit and lending loans. But there were no such parameters like the retail banking or MSME or agriculture. Many of you may not be aware that in those days, for even more than 10,000 agriculture loan, we used to take a mortgage of the land, guarantor and margin also. But now the financing has been very much liberalized. In that context, everything was going smooth that way, but in 1991 and 92, the IRAC norms were imposed on in the banking industry, and for the first time our Bank of India registered a net loss of 1,400 crores. Of course, with the concerted efforts, rigorous follow-up, and some schemes floated that time, we could register a net profit of 56 crores after 4 or 5 years. But that time it was a very Herculean task for all of us. Then in 2000, VRS scheme came. Cream of our staff took VRS, and there was vacuum was created in the 2000. In 2001, again the computerization era was introduced. So first manual from computerization. First it was LPM, then TBM, then CBS, and all the branches were computerized on the CBS platform till 2007 or 8, and that Finacle 7 was being continued till now very recently, and now Finacle 10 has been introduced. The problems of Finacle 10 are enormous, though the management is saying that it is streamlined, but I don't think that, and I want to bring to the kind notice of our leaders that in our zone, our unit also, our officers are facing acute problems for Finacle 10. So there has to be some resolution for this, and I will request our leaders to throw light on that issue also. Thereafter, at least up to 2010 or 12 or something, we had no any threat of the privatization. But the merger and acquisition started, and you know that some of the banks were have been merged in 3 banks, and now there is a big challenge before us, that is the privatization. That is the privatization. You know that our Sunil Kumar ji and Sanjay Das ji always sending some messages on the Twitter, and how much it is, what you call that, we have to face a difficult time as far as the privatization is concerned. Government is pushing their agenda every time, and they are saying that the bill will be introduced in the parliament session, but we don't know which banks is going to be privatized. So for that, we have to make a big struggle for that, and for this purpose also, and some residential issues. Our 27th strike is there, that everyone has to participate. The organization is taking care of all the officer fraternity as far as the transfer is concerned, career progression is concerned, all our disciplinary matters are concerned. Yes, definitely they are with us. Our leaders are very supportive, and they are very vibrant. As I told you, that our Bank of India Federation is playing a very, very important role as far as the ARBOC is concerned, and UABO is also concerned. So the challenges are there, and the challenges we will have to face, and everyone must be a militant. Be with the leader, or be the leader, or be with the leader. That is the slogan. So these leaders are, whenever they give us instructions and directions, that we have to follow it meticulously without any fear. So I know at the end, I am saying that I know that you are very much eager to listen our veteran leaders from the Federation, and I wish you all success in the career progression as well as the organization activities also. And I stop here. Thank you very much. Thank you very much. Jai Hind.
Thank you, sir. May I now request Comrade Vijay Kumar, sir, ED Bank of Maharashtra, to please come forward and address our comrade colleagues. Thank you so much. Any time? President sir, any time limit? Should we stick to that? 15-20 minutes? Okay, thank you so much, General Secretary. Okay, in between I'll take a time. If you want to continue, I'll continue. Yes. नमस्कार मंडळी. मी आज खूप आनंदी आहे. तुम्ही सर्व आनंदी आहात क्या? आवाज आनंदी आहात क्या? I'm extremely happy to be on the dais of this August functioning. Let me profusely thank Comrade charmful, charismatic, able leader, Comrade Sunil Kumar ji. Let me convey my sincere thanks to you. Yesterday you came to our Bank of Maharashtra, to my cabin, in a casual manner invited. I wanted to take this opportunity to be with you this morning. Respected President of this today's event, Mr. Prabhu Das, their Comrade NC Prabhu Desai ji, Comrade Sanjay Das, President FOBO, Sunil Kumar ji once again. Most respectful our ED sir, Mr. Tamodaran sir. I got high regards for him. I was a zonal manager in Kerala sir when sir was ED. And what I'm standing today, I owe to Tamodaran sir also. They have all groomed me, given me promotions time, and I'm standing before the big crowd here. Mr. Comrade Mathur ji and Mr. Agastyan ji, and of late I get inspired by looking into one leader amongst the Bank of India is none other than Comrade Nilesh Pawar. Let us give a big clap to him. He is not only a leader now at Bank of India, Federation Bank of India working president. You write on wall, you write and keep. He will be the leader of the industry. Maybe he may be somewhere else in after few years down the line. My memory goes down the lane. In 2001, I was a scale 1 officer. School 2002 also I was a scale 1 officer. And 2018 I became a general manager of Bank of India in a span of 17 years. Almost all the promotions came through in my life, stroke almost in the merit list on the top. I'm very proud to say, because when I'm standing here with a lot of pride in me, thanks to my parents, thanks to my all the relatives, all my kith and kin, and Bank of India colleague. But I would like to distinctly mention and give my regards and respect is to the first and foremost the organization, that Bank of India Officers Association. Today I am standing here, really I'm telling you from my core of the heart. And I've got a special regard for my leader who has been with me and who has trained me, who has mentored me, is none other than the Comrade V. Ishwaran sir. Really, I got a lot of records for him. And once again, because of leaders like Mr. Comrade Ishwaran ji, I am standing before you. I worked extensively with our Arunda of Bigar. When I was 5.5 years old, I was working in Jharkhand. I cannot forget Debashish Sengupta ji. I cannot forget Maltyar ji. Those are the stalwarts. Perhaps Sunil Kumar ji must have joined that point along with me. Then he was the easy member and groomed and like that. And slowly he became a leader of Bigar. Friends, I would like to share my thoughts today. What is happening in the banking sector, which we witnessed in the last, I can say, almost I am completing 4 decades in almost in another 1 year, going to complete 4 decades in the banking. Banking changing a lot. What was used to be the manual days, no cybags,
and limited to the branch level, now the CBS, and going to be the entire banking sector going to be digital. Whether all the banks are prepared for that, yes, we are struggling to prepare, but there are much things are happening outside the banking system. Today morning I called up our MD and CEO sir, our beloved Dasji, Bank of India. I shared my thoughts, sir. Today got a invitation from them. I am going to grace the occasion. He really wished and he said that why not? You can. And I also congratulated Bank of India. Of course, the information going to be out only tomorrow, but data are available. For the last 7 months performance in the government-sponsored schemes and social security scheme, our bank, Star Bank Parivar, have done it very well, and they are leading number 1 in the list. Please, I should not have told them, but the data is available. Maybe it be declared tomorrow, and we have to wait for a day to celebrate. But I could not contain myself to say that, to be shared with you. And this is what Bank of India, our hearts lies with the downtrodden poor and farmers. I have extensively worked in so many places, so many areas, 6 states, different capacity as a branch manager for 16 years and a faculty and a large corporate and a DZM, zonal manager, and one small stint as the chairman of a Grameen bank, and 2 tenure different banks as a CVO and ED of the bank. I'll tell you, I got at least some limited experience in at least last 5 years in different 5 banks, including Bank of India. With a confidence, I'd say that our bank is really, our people and staff are far better, and we had inner strength to come out whatever we had. I know that though we made a good profit, Bank of India, that we have to yet to see many of the things. Friends, I would like to 2-3 points which I want to share, because this is a platform where certain areas of apprehensions we come always in the life of a banker. One is that the staff accountability aspects, which quite often it pulls us to taking a decision. Somewhere last year, about in the month of Jan 2021, IBA has constituted a committee to look into the staff accountability aspects at the instance of the DFS. I was one of the person honored to be a member of the committee under the chairmanship of M.B. Rao of present Central Bank of India MD. Lot of thought process went into, and I considered that in the month of February, almost after a year, new staff accountability policy was circulated to all the public sector bank to be adopted in the respective board. Every board has accepted that. Friends, I don't know how many of you have gone through the staff accountability in that. In most of the cases, what we happen, in the present circumstances, we lost the habit of reading. No problem. We are no clue to that. Google has replaced entire the system of newspaper or TV or whatnot, or even anything you want to Google or Wikipedia to understand that. It has changed the encyclopedia, everything. But nevertheless, at least come to your working where gives a better burn and better. जो रोटी देते हैं उसको लिए हम लोग काम करना ही पड़ेगा, सर्कुलर तो पढ़ना ही पड़ेगा. These fundamentals will never go to change. Like in a banking, technology may come, digital may come, but fundamentally the 3 or 5 C's will never go into change. Character, capacity, capital. If you are not taking care of these 3, you have to really worry for another next 3. That is the CBI, CBC and court. So better we have to take care of the fundamentals. That never going to be changed. What I am saying, that staff accountability aspect one has to see. In last 4 years which I have seen, Sir, Sunil sir and Pawar, please you make a note of it. Not only in our bank, Bank of India, which I know is hands up, and even other banks, the people who are capable of defending our staff members, it is coming down drastically.
Oddly, very few people are there to defend the people. It is the writing on the wall, the open photo for Federation, the hall, and one of the big unit about 600, 700 people are there. Unless we take it very seriously, and it is a matter of will be very difficult to face it. It is not only the defense representative, even the presenting officers. It is the duty of the association and federation to take care of even the presenting officers, inquiry officers. Gone are the days that really a good of presenting office, inquiry office used to be the management side. They apply their mind and come out. But of late, it is because of the not understanding or not seriousness way in which it has to do. The cases are getting into trap and many people are getting into trap. I am very happy to say that the number of cases have been coming down in all the banks. At least I can with a proud say that wherever I worked, I saw that how the number can be come down. See, staff accountability means sometimes we always see to look at a negative aspect. Never look at accountability as a negative aspect. It is better to get rid of as soon as possible, otherwise you'll be hanging on your sword for years and it will hit you at the wrong time or your promotion. I could see and tell you in n number of cases where I witnessed as a chairman of a Grameen Bank and as a CEO of 2 banks and as a disciplinary authority for the highest authority for the ED. Because of the not taking the accountability properly, it has been problem. I am very happy to say I am lucky in that way. Bank of India was very kind of, in my career at least 4 times I have been charge sheeted. One time when I was a zonal manager in Kerala, I don't know sir, I don't remember, Damodaran sir was there at that point of time. There was an allegation, the allegation was an anonymous complaint against me some areas. I was so happy and at this forum I am telling you now, I am the present old-time director of a Bank of Maharashtra. Nothing wrong in sharing the good things and it's for good for hundreds of people that my MD, Mr. Mahapatra ji, my ED, Mr. Shankar Narayanan, they deputed one GM, go and investigate immediately. I know about that guy. He cannot do that will not do that. 3rd day of anonymous complaint, he was landed and investigated. He said 2 days he stayed with me for a simple one anonymous complaint. He cleared clean sheet. अरे यार आप तो तब चलते रहो. अगर आदि रास्ते में रहेगा तो वो तो कुत्ता तो भागते रहेगा. Now I am standing here. I thank my management. I thank Mr. Mahapatra ji. I thank my Shankar Narayan ji. I thank my association culture and other thing. This is what Bank of India. What I am telling you, it's not only applicable to Mr. Mahapatra ji who are occupying the MD at the highest level. It is applicable to every level. Most of you, this is an officers association. All are sitting here officers. Except bearing 100 or 200 people, you will be disciplinary authority for so many people. When it comes to the organization, we should not limit ourselves only to the officers. Yes, certain roles to play as an officer. We got some protocol and respect and dignity and everything. At the same time, when it comes to the organization as a Bank of India, the entire star bank, whether it's a sub-staff or I call it as a super staff, or a clerical, everybody is same and we work as a team. Are we looking into the award staff matters very seriously? As a disciplinary authority, I leave the question to you. Leave alone the disciplinary matter to be dealt with in kind of award staff by the officers, maybe 2 or 3 or whatever capacity. Are we dealing the cases properly at a time? I have my own doubt. In lot of NP accounts, for years together we keep it pending at the time of just before the retirement or some whimsical manner, or if the person doesn't like it, it's still happening in the industry. At least with the 3 or 4 banks experience I can tell you about. Friends, it's very not good for the organization. There are so many early warning signals available for when account become NPA. Early warning signals, you all must be knowing. There are 87 as per the RBI list out. Starting from when the account has not been serviced, interest to stock statement not submitted to the even the person who are not coming, not met so many days or public domain. There are 87 items where one can identify, one can recognize there is a early warning signal. But before that early warning signal of asset quality, are we taking the cognizance of the early warning signal of the human behavior? Quite often we are missing it out. Comrades, why I am telling you, this is a forum where we can share our hearts and thought process. We can share our thought process and ideas to share with you the experience. Very quite often, when there are early warning signals of human behavior, what I try to, there are 6
early warning signals available to any colleague before something wrong is going to happen. Before something going to happen. A person who is living beyond wealth, beyond his means. A person joined 1 or 2, 3 years before. If you purchasing a latest bike of 1.5 lakhs, 2 lakhs cash without taking a loan, will not bring you some bail in your mind. How is this fellow good to be? It is our duty to see that how this person or a boy or a girl who is paying. When I say sorry, any irregularities or frauds happen where staff involved, it is the gender. There is no gender bias. I could see equally both the genders and the younger generations have done it with the data. It is 2-3 banks. And when a person who is continuously coming, not taking a leave, even years together, even though we introduce a mandatory leave and rotation of a job and all, I don't think it is literally letter and spirit is implemented. There are some pockets where we are hoodwink and we are avoiding it. There are occasions where our staff are having excess relationship more than the required with the customers. There are people who are highly indebted, continuously borrowing. They are all vulnerable for committing irregularities and fraud. There are some people who are throwing the names of, even I can tell you not to get offended, taking the name of the higher level connections or higher level connection with even the association. I know to Sunil Kumar ji, I kuch nahi hoga. Sorry, this is what it's my personal view. I may stand corrected also. But unless otherwise we take those early warning signals very, very appropriate level, friends, 2 out of 3 cases I have seen, the person who commits a mistake and fraud, he escapes. The persons who are looking after in the surround, they get trapped unnecessarily. This staff accountability, these are the many more points which out of my experience I shared with the MB Raw committee. I don't know, the wordings, they will take it in such a manner. They will not get everything in a raw manner. They will in a polished manner. There are so many things have been changed, brought changes in the accountability previous one. That's the accountability of the successor. This is what they said. Mainly in our NPA accounts, what we say, that account become NPA, we'll see only the case when it was recommended by whom? Desk officer कौन sign किया, sanction किया, irrespective of the year of sanction. It would have been passed through even 10 years. It used to be there even 2 years before I have seen. One of the cases, sir, very sorry to say that, 36 people were CBI asked prosecution sanction. 36 people in one account. It was given originally by one bank, taken over by another bank in 2007. 2011, 4 times renewed, and it was multiple time increased, limit increased. 45 lakhs was taken over the time. It went up to 45 crores in 2014. And an account became NPA declared with a predate fraud in 2000 because of thanks to asset quality review in 2017. And a charge sheet issued in 2019. And CBI case come when I was a CVO in 2020. What I do with that? I am proud to say first, it is not to be, because if I am not in the office, I could share so many things. But my protocol demands that I should not go beyond certain period. But I will be failing in duty unless otherwise so the gravity of the case, you people will not understand. It is, if the quote the example and benefits the thousands of people, I will be happy. Friends, as a CVO, I said that nothing doing. I will not give any prosecution, not even single person, whatever may be. I know 2-3 people are in 2017, there is a money trial, but I said nothing doing, I will not give. Let me see. Sir, I am very proud to say that I fought with the CBI, I fought with the CVC, I fought with the DFS, and they were all so nice when I went and convinced. Ultimately, after 1 year, it is completely exonerated. None of them were given a prosecution sanction. It is on record. Again, I'll tell you how the federation, association leaders were all sacrificing their life. I have changed. I was a very active member of the association. मेरा ईश्वरन जी बोला तो वही मेरा
मंदिर है. I like a गुरुकुलम. मैं उनके साथ पूरा at least 7 years completely I used to know 24 hours में नींद का बाद नींद का छोड़ के बाकी सब गुरुकुल उनके साथ. What a kind of training you used to get. There was used to be stress, trauma. We cannot forget 2002, 45 days. It is a case to be, which we can discuss. I don't know some of the occasion how we all struggle and hats up to the leaders here. Had been Dasji, Babu or Sunilji had taken the proportion, definitely they would have reached MD level. Definitely. With the caliber, commitment and hard working and wide spectrum of the knowledge, really they have sacrificed. Let us give a big clap to them. No. I think you have a doubt. I have got an immense respect, faith for the leadership. I have been dealing as a management side, completely opposite side with a different kind of leaders. I do have my own perspective. I put forth my point and I will say not accept and certain things. But one thing is fundamental is never changes, that unions and associations have played a very, very, very big role in the country for the national building. No doubt about it. And if anyone wanted to become a real leader, I suggest that on a rotation basis, please take them as an EC member for 1 or 2 terms. Ask them to work the leadership. I know the days when I was a EC member in one of the clusters. My leader will come to know about the entire cluster of 14 branches, any information regarding the good or bad or what. My leader will get the first information, management will not get the first information. Management is a management. I will not say, from the management side, we have got a lot of different things to look. We cannot allow this to just go like, like a 2 eyes of an individual. You cannot afford to lose. It is like in a track, 2 line. Both should be there. Both should know their roles and play, and they have to be responsible for that. I am very happy that Bank of India has got such a kind of leadership. Somebody was telling we should always remember the veteran leader, Sandidas Gupta. He was the leader for decades. He was heading the AIBOC for decades. Followed by that. Few thoughts. Friends, coming to the unit, Pune unit, where I am also operating as a major. Here, the Pune, lot of business opportunities are there. Bank of India being a lead bank in the 14 districts of Maharashtra, major part in this part. You're all doing very good. And Bank of Maharashtra is also in many of the districts work shoulder to shoulder with you. But still long way to go. I am seeing from the SLBC convener desk, we can do much better water today. When I congratulated our MD sir, Mr. Dasji, but long way to go. Bank of all the public sector banks known for their service to the society. In the year of 75 years of independent Azadi Ka Amrit Mahotsav mein, lot of campaigns and credit camps and all doing. One of the few things I would like to mention is that many times we get carried away or bored, or we get fed up, or whatever you say. When the government or authorities say that to campaign, then we are doing. Why we should wait for that? Don't we have responsibility to do ourselves? This question also I would like to ask you. Many of the banks I've seen, many including Bank of India, Bank of Maharashtra or other IOB men. When we push to the corner we have to do. I am very confident that public sector bank have to lend to the poor, farmers, downtrodden, have-nots, SC/ST, and then Mahila ko SHG ka hai. Why should we wait for some target? As our Prime Minister has been harping that saturation is only the target, not the percentage wise. Even now we can have wonderful opportunity. I call upon all the members here, please have a passion for the poor. We have got a lot of scope for the improvement, the society's improvement. I could visit Nandurbar district, Kadchurali, Lakchur, Jalgaon area.
Still, we have to do a lot of work. Through this forum, I request all of you to help in lending the poor, and poor are bankable, poor are profitable. I could say with a lot of statistics. In SHG, we have got 77% on an average, 77% of lend, whatever amount we lend, 100 rupees, हम लोग loan देगा तो 70% of the deposit at your casa. You check yourself. I would like to Mr. Augustine to check tomorrow. How many SHG account, what is the SB balance lying, how much you lend. That I could say I have analyzed. It is 70%. That means your salary and my salary majority paid by the this kind of small borrowers. Why should we ignore them? We should not ignore them. They are the people who can you are some bread and butter to them. So please be all our SSB, JJBY, APY. Sorry that I am on the associations that I am talking. Unless otherwise we do banking, we do business. The organization will come first. So I call upon to you: business first, business first, business first, and compliance always. Compliance, when I come to compliance, 2-3 things I would like to say that there is a wide gap between the branches and the controlling office. Many times controlling office or monitoring office which fails quite often. Because of that, lot of accountability issue frauds are happening. The controlling office, they feel that, particularly the mid-tier, the zonal office, they feel that just to pass on the information that office to the branches. That is not the role. You have to keep a complete, who are working in a zonal office level, please take care of that. We are at the head office and zonal office always in a comfortable position when compared to the branches. They are in the forefront. They are facing the brunt. But most of the cases, when we push, they go aggressively, they land up in a problem, and when you are not recognizing immediately like early warning signal on the negative side, on positive side, the people who go berserk and give loan, and by the time you turn down, there will be huge NPA and it will be a problem for the zonal office. Again, I mentioned staff accountability has been brought to in the fore of the accountability of the zonal office. I don't know how many of you may come across this after a few years, whatever is happening, because it is this new staff accountability policy is effective from 1st April 22. So if anything is there year after it fails, and if the zonal office fails, the authority is concerned, who is monitoring, who persons who monitor, credit monitoring karte hai na, or vigilance department, inspection department, if they fail, they are equally accountable, if not more than the branches who commit the mistakes. Please, you take care of this. With this, thank you very much for the opportunity given. Once again, good luck. Jai Hind, Jai Bank of India, Jai Maharashtra, and Jai. थैंक यू विजय कुमार जी. आपके लिए मैं कहूँगी, पुटिंग ईयर्स इनटू लाइफ इज एजिंग, पुटिंग लाइफ इनटू ईयर्स इज ग्रोइंग. आपकी जो ग्रोथ है, 17 साल में GM बनना काबिल तारीफ़ है. इसके आगे हमारे बीच हमारे एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एन दामोदरन जी हाजिर है. उनको थोड़े समय की सीमा है, जाना है. आई एम इन्वाइटिंग हिम टू एड्रेस द गैदरिंग. बीते कल से सीखो, आज के लिए जियो और आने वाले कल से उम्मीद रखो. आप हमारे साथ कल थे, आज हमारे साथ हैं, और हमारे जो आगे की जनरेशन है, आज जो हमारा एवरेज एज 36 है, उनके लिए आप प्रोत्साहन पर भाषण करें. एन दामोदरन सर. Good afternoon, all. It is indeed always a pleasure to be in this forum, sharing the dais with Comrade Sunil and Sanjay Da. I have been coming to Pune often when I was in the bank also. One subtle change I am finding now. बहुत सारे यंगस्टर्स दिखते हैं. एक्चुअली मैं आते वक्त बाहर आई वॉज लिटिल मीन्स सरप्राइज, मैं कुछ रॉन्ग एड्रेस में आ गया क्या, क्योंकि बंच ऑफ 25-30 यंगस्टर्स वर स्टैंडिंग देयर लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स. दिस वाज अगेन अ कॉलेज. मुझे डाउट ही आ गया कि मैं बैंक ऑफ इंडिया फंक्शन में आया या अपना एसोसिएशन इसमें, बट नाउ आई फाइंड ऑल यंगस्टर्स आर हियर.
and it is a very nice change to see, demographic change. President Officers Association Pune Unit, Mr. Prabhu Desai, Comrade Prabhu Desai. President of Federation, Comrade Sanjay Da. सब लोग पिंक पहन के बैठे हैं, वॉलंटियर्स एंड ऑफिस बेरर्स, एक्सेप्शन इज संजय दा. और मैंने पूछा, वो बोला मैं बंगाल का हूँ. आई एम नॉट अ सॉफ्ट पर्सन. ऐसा भी होना चाहिए कोई, है ना. वर्किंग प्रेसिडेंट नीलेश पवार, विजय जी ने तारीफ किया. मैं भी 5 साल पहले देखा, अभी बहुत फर्क है. बचपना था, मतलब ही वॉज मासूम, क्या बोलते हैं, यंग, मासूम, बराबर, हाँ मासूम था. लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गया इनका 5 साल में, एंड वजन भी बहुत बढ़ गया. टेक केयर. एंड माय डियर विजय, I have, from the day I saw one of the most, I should say, vibrant and bubbly executive I saw in, and after 5 years also as executive director of Bank of Maharashtra, he is like that. Suddenly मैं एक दिन एक फोटो देखा, प्राइम मिनिस्टर स्वानिधि ना, लोन स्कीम, and he was there on the platform sitting with one beneficiary, loan beneficiary, and talking to him, chatting to him. And it is no surprise, 2021-22, Bank of Maharashtra in growth percentage topped all the public sector banks. The vibrancy, enthusiasm, the leadership qualities which he exhibited here. लेकिन इधर आके वो ED, not as a ED he talked as a यूनियन मैन, अर्लियर एसोसिएशन, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी के बारे में बहुत डिटेल में बताया. आई विल समराइज इन वन सेंटेंस. when I became in charge of staff accountability in Bank of India, there were 3,10,000 staff accountability cases pending, and 6 महीने में हम 2 डिजिट में लेके आए. So it is all in the willingness for the executive to see reason. That is one major contributing factor to continue the case or close the case. Positivity, Mr. Vijay Kumar showed a lot in that. Mr. Augustine is here. You will all should be prepared for a very flamboyant speech from him, very motivating speech he is going to give. I have heard him twice and very inspiring. Mr. Mahesh and my dear Madhur on the stage, all the office bearers here, DGMs, AGMs here. I don't, because a number of people are here, executives. And my dear comrade Sunil. मैं सोच रहा था कि comrade यूज करूं क्या नहीं है, क्योंकि it is for me and Sunil, it is a relationship beyond banking. हमारा पहला मुलाकात ऐसा ही हुआ कि आया तो थोड़ा पुश देना चाहिए. मुझे लगा कि रिटेल में बहुत कम था अपने ग्रोथ. 2017 की बात है. तो मुंबई ईस्ट ठाणा साइड का ब्रांच मैनेजर मीटिंग में थोड़ा हॉट स्पीच हो गया था, और द लीडर हियर बहुत भड़क गया नेक्स्ट कॉर्पोरेट ऑफिस मीटिंग में, और उसने भी एक भाषण दिया उधर. बट इन स्पाइट ऑफ दैट, ट्यूनिंग कहाँ सेम फ्रीक्वेंसी होता है, द रिलेशनशिप बॉन्ड्स
beyond all these things. And today, if at all I am here talking to you all, it is because the love and affection he has that has brought me here to this platform. Otherwise, 3 साल हो गया, लगभग 2.5 years हो गया, कौन याद करता है ना? एंड अपना भी इंटरेस्ट थोड़ा दूसरे एक्टिविटीज में चला जाता है. सो फ्रेंड्स, the bank, as Vijay ji told, the bank has done well. Much can be done. When I joined the bank in February 2017, March 17, result was 2,400 and odd crores loss. And this time for the whole year, I think the profit was 3,400 crores, a big change in 5 years. Congratulations to you all. आपका मेहनत, आपका पसीना, that has come as profit. And again, Vijay ji talked about government schemes. I think Bank of India is topping. 110% of the target is achievement in Mudra loan. 95% of applications have been sanctioned in Swanidhi. Jandan Yojana or the insurance schemes or APY, everywhere you have exceeded the targets. And again, this requires legwork, and hats off to you all. Again, the credit goes to you all. In no business is possible unless through minimum two factors are required. One is capital, another is labor or the human resources. Without these two factors working together, minimum, no business is going to thrive or perform. I am happy the human resources represented here by the trade union, Bank of India Officers Association, and the leadership here led by Comrade Sunil ji, Comrade Sanjay da, and all others have been so positive that the capital could be leveraged and the performance could be given. And the water transformation from 2017, AQR was there, PCA came, heavy losses. From that position, moving to 3,400 and odd crores of profit with 86% or 88% of PCR and a good capital adequacy of 17% is an excellent performance, and that would have not come without the support of the Officers Association. Hats off to you all. It is like a train moving on the track. The management is one track and the human resources represented by the trade union is the other track. इसमें तालमेल बराबर होना चाहिए for the train to move ahead and reach the destination. And for this balance to be achieved, दोनों हाथ से ही ताली बजता है ना. And I am very happy here the management as well as the trade unions, particularly the Officers Association, is in the same wavelength for the business, for the bank to move ahead. If at all it is not there, we know what will happen. It has happened in many other cases. प्रभु देसाई जी ने बताया कि संडे का काम करने के लिए कॉल था, एंड देयर वाज अ काउंटर कॉल बाय एसोसिएशन एंड नो वन अटेंडेड. यस, देयर शुड बी अ वर्क लाइफ बैलेंस. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड ड्यूरिंग माय tenure as ED,
I don't remember having made even a telephone call to anyone on a holiday, on a Sunday. Forget about holding meetings. लेकिन एक बार हुआ था, एक संडे हमने बुला लिया पूरा all over India. The branch manager should attend one conference because the government told to discuss with at the ground level and come out with suggestions. तभी भी सुनील जी ने कॉल दिया था not to attend. लेकिन when I requested him, I made a call and everything happened smoothly after that. And I feel it is a credit to my pocket, not Sunil's. I could get it done over a phone call. इतना अच्छा relation we could materialize during that 1.5-2 years time. That coming to the trade unions, the challenges are many now. एक जमाना था, एक टाइम था कब फाइनेंशियल बेनिफिट्स वेर काउंटेड अ लॉट. अगर कुछ अलाउंस कुछ बढ़ा दिया 10%, 20%, इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट. लेकिन आज द इश्यूज दैट आर बिफोर द ट्रेड यूनियंस एज वेल एज द बैंक मैनेजमेंट्स are very different. Merger and acquisition or integration, it is a very big issue. Technology, it is a very big issue. Outsourcing is an issue. And I can see here the youngsters coming in large number, and all must be hot-blooded, demanding their rights. हक नहीं है तो भी हक समझ के लड़ने वाले इधर होंगे, क्योंकि मैं भी था ऐसा ही एक जमाने में. आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सेम what you call, I was groomed in the trade union, so I know how will be the expectations of the youngsters. That is another issue facing the trade unions as well as the management. And another big issue is large number of women joining the banks. Their issues, which was very negligible earlier, it will be a big, in a large proportion, large numbers. And in all these things, a compassionate approach by both even the trade union leaders should remember that their members have to be approached in a compassionate way, and it suits much more to the management also. The fault lines are still existing. Nothing is very smooth. अगर इश्यूज ही खत्म हो गया तो ट्रेड यूनियन का क्या रीज़न बनता है? तो मैं भी ट्रेड यूनियन में था, तब हम इश्यूज वी यूज्ड टू कीप अलाइव. अगर इश्यूज सब सेटल हो गया तो हम नया इश्यूज लेके आ जाते थे. नहीं है तो ट्रेड यूनियन का मीनिंग निकल जाए, यूज नहीं होता है. बट देर आर मेनी इश्यूज. वो कंडीशन, वो लिमिट तक हम गए नहीं. देर आर मेनी फॉल्ट लाइन्स and the turbulence which is underground, it is not felt outside, but it exists. There are many boundaries in the relationship between the management and the unions, trade unions. One is contractual boundary. आजकल इसमें थोड़ा समस्या आ सकता है, आ रहा है सभी बैंक्स में, because instead of taking permanent employees, officers or employees, banks are preferring or going towards partly or large extent for contractual employment. Contractual employment may be outsourcing also, shared services. These are all the possibilities in a big way in future. How the unions are going to take that, how the management are going to drive that, because cost reduction is the priority for the management. And
compliance level also, partly the management may think that training outsource people are putting the blame on the outsourcing agency for the compliance and the frauds is easier than exposing the employees who are transferred frequently. Cost reduction is also there. So there are issues on both the sides. So contractual boundary is one thing which is going to get violated a lot in future. Then is the legal boundary. Sorry, I am having Agustin ji on the dais and still I am going to talk about this. I may be wrong also, he may contradict later. Legal boundary, what is the law that is governing the service conditions of the officers or the employees? Particularly officers. It is all outdated. Banks are still governed under one of the laws governing the banks is Shops and Establishment Act. I don't know what is the connection between these two things, but we are not having a defined legal law for the banks or the service conditions of the officers particularly. So this legal boundary also will get tested. Then is the power boundary. Always management will feel these are my prerogatives, मैं बोलूँगा वो होना चाहिए. Unions will tell human resources is my prerogative, my control, and I will define what is to be done, and that tussle will continue as ever. Then governance boundary. Governance boundary is, earlier it was all loosely structured, but now all the procedures, everything, SOP, everything is there. What is to be done, how is to be done, everything is defined. So discipline and compliance, all these things are going to have a bigger role play. So the governance boundary also will get violated or vitiated, and there will be issues there also. Then the social boundary, a very big thing. Earlier, if anything happens, we used to discuss in the branch or in the zone, region, or in the NPG or in the head office. उधर एकदम क्लोज डोर में. आजकल कुछ भी हो गया सोशल मीडिया पहले आ जाता है, and every boundary is in tatters. So again, this is an issue for the management as well as to the trade unions. I am throwing some of my thoughts, and मेरा काम क्या है, throw the ball. बाद में आप लोग सोचो, आप लोग कुछ decision में आओ, कुछ steps लो. Thank you very much. Wish you the best to all of you. Thank you, Damodaran sir and Vijay Kumar sir. Thank you for gracing the function. I would now request Augustine sir, DGM NBG West 2, to please address our comrade colleagues. Respected President, Mr. Desai, Comrade Desai, Mr. Meena, in absentia, Executive Director, former Executive Director, Mr. Damodaran Sahab, then respected ED
our own former GM Vijay Kumar sir, then Mr. Madhur, General Secretary, Mr. Pawar in absentia, then Galaxy of our GM, Deputy General Managers, AGMs, and leader of leader, Mr. and comrade beloved Sunil Kumarji, and all our human assets. It's my great privilege to share my few words with you because you're part of my 51,000 intangible assets. I cannot assess your value. It's intangible, invaluable. I cannot measure it. So you're my human capital. I can see your vibrancy, your talents, your spirit, your energy. After all, the trade union pillar is our solidarity, fraternity, and unity. That's essential. That is required from you. From Pune Center, when I entered into this prestigious hall, I saw, as a former executive director said, this is a college, you see the face. Majority of our officers are youngsters, vibrant. You know, our bank is a secular bank with a 50 lakh capital. Then see 50 employees. Where we are now? We are marching to 11 trillion journey with the support of you, your talents. So, comrades, team members, you find human asset in your subordinates, your clerk, sub-staffs. See the value. As per study, intangible asset, human asset is greater than the physical asset, financial capital. With you, we are running the show. We are building. Your seva is a Madhav Sena. You are doing Mano Sena through building up the nations. From Pune Center, see the vibrancy of our comrades, how nicely you arranged the meeting, your participations. What I want to tell you is, we are all one family, that is Bank of India. Our tall leaders led this institution and made it 116 young years. This is not a 116 old bank. This is a 116 young bank. Our mantra is Loga Samasta Sugino Bhavantu. So that you carry in your heart, in your work establishment, in your home. Let us work together and give result. If you keep this mantra in your heart, you can deliver any result. You find emotional intelligence in your colleagues, comrades, so that in modern science says that emotional intelligence is required. If you are a successful
workforce, if you have talents of emotional intelligence, if you know your subconscious, all comrades, you activate yourself. Uddishtida Jagrada. In welcome speech, I heard this word. So that is required, so that vibrancy will come. You know, in our NBG, we performed extremely well. In last year, this year, we are depending upon you. Q4 is fastly approaching. There is no need of friction, firing, disruption, only to activate and motivate you. So we will get result. You're our asset. You're our mantra. You're our future. You're our nations. Everything is within you. So you inspire your team. So this hall with a human asset, I am again reiterating. Sagana bhavadu, sagana bunattu, sahaviryam karavade, saha. The partnership, the wording of the jurisprudence or philosophy or ethos of collaborations. So that is what I think I said, 3 pillars as fraternity. So your fraternity, you know your brethren, your sister. I am very happy to see that lot of female officers have come for this August function and made it a vibrant. See what a participations. And our association also got huge participation of women officers. Thank you, Sunil Sahib. It's your handholding them, bringing them to the leadership. In an industrial democracy, participatory management is very important. You all have right to life. That is a fundamental right. Even if you jurisprudentially examine it, the cessation of work is a strike. That also comes under 19(1)(c). Right to freedom of speech and form association and union. So it's a multi-dimensional things. So my philosophy is to inspire you. So today's meeting will be an enlightening meeting for you to see your capabilities and understand yourselves. See your challenges and opportunities and take your all failures as a first learning lessons so that you can make wonders and miracle. I wish you all the very best in the coming days. Let us work together and make this bank again 117 years young, because it should be remain in public sector. That is because of your strength, your capacities, your capabilities. So everything is depending upon you. So this institution will remain forever. Nobody can touch you. It will be your asset. We are our family, our parents, children, everybody. We all, I think, belonging to. So it's all depending upon you. Our dynamic leaderships. Always, yesterday I noticed what was the concern. How see our leader, top leader of leader, share his concern and business promotion council. So it all shows that the trade union leadership is
actively involving. They are protecting the bank. So they are saving the institution. On this August occasion, I wish you all the very best to Pune unit. They are celebrating 41st annual general meeting. My wishes are there, greetings are there. I wish you all the very best to all the tall leaders on the dais. They have taken that much pain and sharing and carrying you and all of you. So all the very best to you. With this, I conclude my a few humble words. थैंक यू अगस्टिन सर। चांद देखकर मुस्कुराना बेशक ईद है, लेकिन इंसान इंसान को देखकर मुस्कुराए तो हर रोज़ ईद है। अब नाउ आई एम इनवाइटिंग अवर यंग लीडर कॉमरेड नीलेश पवार सर। मैंने एक मंदिर के बाहर पढ़ा था, क्या खूब कहा है साईं ने, रोज़ मांगने आते हो कभी तो मिलने आया करो। लीडर्स के साथ यही होता है, जब प्रॉब्लम्स आती है तो लीडर्स की याद आती है, पर आज आप सभी लोग इन्हें मिलने आए हो। जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नीलेश पवार सर। President of this function, President of the unit, NC Prabhu Desai ji, the architect of this function and General Secretary of Pune unit, beloved Madhur ji, President of our Federation of Bank of India Officers Association, Sanjay da, General Secretary of Rajasthan unit, Comrade Mahesh, Deputy General Manager Agustin ji, Executive Director AB Vijay Kumar ji in absentia, RX ED Davudan Saab in absentia, all the executives, Deputy Zonal Managers, DGM sitting in the front row, Rajesh ji, our ex-treasurer, Ganesh, our current treasurer of Federation, Ashish, President of Vidarbha unit, our treasurer of Mumbai Goa unit, Comrade Vikram, Comrade Vikas, Vice President Anton, Chandan, Gausane Saab, the Deputy General Manager of NBG West 2, Patak ji, Ilahi Sayyed ji, all Katti Saab, of course, the ex-president of Pune unit, and the leader of leaders, the lion of banking industry, Comrade Sunil Kumar ji, and the topmost, all my dear comrades of Pune unit who have come from all the nooks and corners, from Kolhapur, Nasik, Satara and all the places, and I can see fans rolling. I know AC is not working. Kindly bear with me for some time. Madhu ji has given me 10 minutes. I will try to restrict myself to that timeline only. Comrades, I'll be very brief, but let me tell you, the original genesis of problem is that we don't know what we are, what we as bankers are. We just feel that our job is to collect deposit, lend money. No. We are nation builders. Yes. Today, the roads, the airports that we see, the nation that is growing is because of public sector banks. Today, the self-help groups, the Mudra loans that you have given, the PM Swanidhi that you have given, the employment that has been generated, it is because of public sector banks. The underprivileged people, they get access to banking services, it is because of public sector banks. So yes, clear this in your mind first of all, that we are not just mere bankers doing or lending and taking deposits and lending money. We are the nation builders. You should have pride into that. Today, who declares that a person is dead? A doctor. But who declares a person is alive? Who signs the life certificate? Only a banker. So you understand your importance in the economy. On the note of that,
I'll just, before I start few things to tell you, I just need to tell you that what our respected Presidium over here is doing for each one of you. Comrades, हम लोग ने सबने देखा है कि हाल ही में किस माहौल में सब चल रहा है. In the upcoming monsoon session, it is the probability that the amendment to the Bank Nationalization Act, the bill for amendment to the Bank Nationalization Act will be tabled or might be tabled, and that is the reason that UABU has given a call. अभी आप सबको ये जानना जरूरी है कि आपकी संगठन आपके लिए क्या कर रही है. At AIBOC level, we are fighting against privatization. Apart from that, you all must have seen strike का notice आप सबने देखा होगा. The main demands that we have is 5-day banking for an efficient work-life balance that Damodaran Saab was just saying. Because अगर हम इसको अभी नहीं डिमांड करें, it will be clubbed with the next settlement which is due in November. So it is our utmost endeavor that we clinch it, and our respected comrade Sunil Kumar ji, हर जगह आपने देखा ही होगा that he is already fighting for 4-day banking, ताकि 5-day banking तो मिल ही जाए. This is a part of bargaining or negotiation skills. अगर आपको चाहिए कि आपको 5-day banking मिले तो लड़िए 4-day के लिए, 5-day तो उनको देना ही पड़ेगा. Comrades, बाकी जो मुद्दे हैं, many people were saying that they are saying very young people. Today, most of the officers of Bank of India are covered under NPS because there was a heavy recruitment after 2010. If you see your salary slip, today the employer contribution is 14% for employer, and for employee it is 10%. It was raised in the last bipartite settlement on the lines of central government employees. But if you see, the entire 14% for central government employees is tax-free. But for bankers, the initial 10% that we had was tax-free, is tax-free, and the now 4% that is increased, it is taxable. You just imagine for next 20, 25, 30 years, what implications it will have on your salary. That is what we have raised. See, we all are learned individuals. A.B. Vijay Kumar Saab was just saying कि you should be a reader. Yes, you should know. You should be technically, we all are qualified, but you should read. आज there are various anomalies in the settlement जहाँ हमारा DA factor is 0.07, whereas for LIC it is 0.08. We have taken many issues at UABU, at IBA level. आज जितने भी हमारे ऑफिसर साथी हैं, हस्बैंड वाइफ, इफ दे आर वर्किंग इन द सेम बैंक, दोनों को LFC मिलता है? नहीं मिलता है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नहीं मिलता है ना. तो एक नुकसान है, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि बैंकर से बैंकर ही शादी करेगा. बाहर कोई शादी करने को तैयार नहीं है. आई एम यंग, आई कैन रिलेट टू प्रॉब्लम्स दैट माय फ्रेंड्स आर फेसिंग बिकॉज चलो फ्यूचर है थोड़ा, 5 साल बाद का कहानी है. So we have taken that also, so that both of them can get the medical conditions that we all are aware. That has been taken up. Your federation is fighting a lot without you demanding. आप लोग को पता भी नहीं था कि आपका टैक्स कैसा कट रहा है, या आपका DA का फैक्टर क्या है. एट बैंक लेवल हाल ही में सबके लीज रेंटल बढ़ गए, व्हीकल लोन बढ़े. One person who is instrumental in getting this done is sitting on that is Comrade Sunil Kumar ji. He is the person who got it done. एंड जो 2 साल पहले जो पर्क्स परक्विजिट्स का बात कर रहे थे, तभी आई एम अ विटनेस टू इट दैट इट वाज बिकॉज ऑफ सुनील कुमार जी एंड आर एक्स CD दामोदरन साहब कि अचानक 25% राइज इन पेट्रोल कैसे हुआ था. इट इज बिकॉज ऑफ हिज एक्यूमेन, इट इज बिकॉज ऑफ हिज नेगोशिएशन स्किल्स कि उन्होंने हम सबको एक साथ इतना 25% राइज, क्योंकि दैट हैड अ वेरी बिग इंपैक्ट ऑन आवर बैलेंस शीट. बट स्टिल आवर मैनेजमेंट वाज अग्रीड बिकॉज ऑफ द वर्क दैट वी हैड डन. कॉमरेड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हीकल लोन, लीज रेंटल, आप सबको एक चीज हमको बतानी है कि आज इट इज ओनली एंड ओनली इन बैंक ऑफ इंडिया दैट वी आर हैविंग अ गुड नंबर ऑफ compassionate appointments being done. It's a very overwhelming figure that I should share it with you all. In the last financial year, from 1st April 21
to 31st March 22, around 170 applications for compassionate appointment came, and it gives me immense pride to tell that out of 170, 150 people got compassionate appointments in our bank. It does not happen in other banks, comrades. See, your federation is fighting. ये compassionate appointment का जो policy था, उसको revamp किया गया 1 साल पहले, उसी के अंतर्गत इतने लोगों को compassionate appointment मिल पा रहा है. क्योंकि क्या हुआ, कोविड के टाइम पे हमने देखा कि लाइफ इज वेरी अनसर्टेन. यंग पीपल, सीनियर पीपल, एनीबडी सकम, किसी को ड्यू टू कोविड या बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स देयर वाज अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ मेनी ऑफ आवर ऑफिसर्स, एंड देन द फैमिली मेंबर्स, हम लोग भले ही उनको सांत्वना के लिए वहां जाके एक दिन बात कर लेगा, कोई जोन की तरफ से कोई बात कर लेगा, ब्रांच की तरफ से बात कर लेगा, बट that family needs solace, and it can be only given by two things. One is monetary and second is compassionate appointment. So we got that done. So kudos to our federation for ensuring that so many people got compassionate appointment. रहा बात स्टाफ हाउसिंग लोन का, क्योंकि क्या होता है अगर किसी का भी अनटाइमली डेथ होता है तो द एंटायर टर्मिनल बेनिफिट्स दे ऑल गो टुवर्ड्स स्क्वेयरिंग ऑफ द हाउसिंग लोन, एंड हाउसिंग लोन इज obviously a very big liability, 50 lakh, 60 lakh, 70 lakh. तो इसी के लिए our federation has given a very fruitful suggestion to our top management that let all the staff housing loans be covered by personal insurance and not by accidental insurance. So if at all anything happens to the officer, his entire loan should be squared off by the insurance and his terminal benefit should be given to the kith and kin of the family. This is what is expected from a mighty federation, and yes, we are doing it for each one of you without you all demanding. Apart from staff housing loan, आप सबको BS के बारे में पता होगा, उसमें हम लोग बढ़ोतरी करने का कोशिश कर रहे हैं. उसके अलावा जब मैंने बैंक लेवल का बात कर ही दिया है, एक छोटी चीज जो मैं आप सबसे शेयर भी करना चाहूंगा कि अगर आपकी संगठन आपके लिए बिना आपके डिमांड किए कुछ चीजें कर रही है, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी, फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली मेंबर्स आल्सो, व्हाट डज इट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? इट जस्ट एक्सपेक्ट्स very few things from you. It expects that you make the bank strong, you make the organization strong. And how can we do that, comrades? How can you make the bank strong? We can make our bank strong by being a knowledge worker. जहां पे हम काम कर रहे हैं, फिर वो डिपॉजिट्स हो, एडवांसेस हो, रिकवरी हो, जोनल ऑफिस हो, ब्रांच हो, जहां पे भी हम काम कर रहे हैं, सिंसियरली काम करिए, विद इन द लीगल फ्रेम काम करिए, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को समझिए, OSR को समझिए और उसके अंतर्गत काम करिए ताकि बैंक का बिजनेस लेजिटिमेटली बढ़े. सेकंड, एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस रखिए खुद के लिए और अपने साथियों के लिए. मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, अभी AB विजय कुमार साहब ने 3 C's बोला. आई विल जस्ट elongate it and say there are 5 C's of leadership. Officers are leaders because हमारा स्टार्टिंग ही जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 है. कई जगह हम ब्रांच मैनेजर्स हैं. ब्रांच इज अ स्मॉल फैमिली, सो वी आर एक्सपेक्ट टू लीड जोनल ऑफिसेस में, ब्रांचेस में, हेड ऑफिस में, सब जगह. तो देयर आर 5 C's ऑफ लीडरशिप. आई जस्ट टेक 2 minutes extra, sir, and I'll just communicate what is to be done so that your work life balance in the branches is safe. First is care and compassion. You should have care and compassion for your team. It's a small family. आप दिन के 10 से 12 घंटे आपके वर्किंग प्लेस पे बिताते हैं. सो लेट अस हैव केयर एंड कंपैशन फॉर ईच अदर, क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ फैमिली. लेट अस हैव कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन शुड बी ट्रांसपेरेंट, नॉट लाइक आवर सर्कुलर्स, टू बी एम्बिगुअस. द कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, इट शुड बी ऑलवेज ट्रांसपेरेंट. आपको क्या चाहिए, सामने वाले को आपसे क्या अपेक्षित है, ये हमें कम्युनिकेट करना जरूरी है. चैलेंज योर करंट एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस. Always challenge yourself so that you can do better. Capacity building. Yes, the need to learn and to train yourself for better is expected from each one. And last is customer service. Because if the bank survives, we all will survive. So जहां पे भी है एक अच्छा कस्टमर सर्विस दीजिए. ये रहा बैंक को स्ट्रांग करने का बात. इसी के साथ संगठन को स्ट्रांग करना है, क्योंकि संगठन एक ऐसी छतरी है आपके ऊपर जो आप धूप में, बारिश में, सब जगह यूज कर सकते हैं. तो संगठन को स्ट्रांग कैसे करेंगे, उसका 2 तरीका है. एक,
तो जो कॉल हमने दिया है फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशंस का यूएफबीयू ने दिया है फॉर अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन या जो हमारे पुराने मुद्दे हैं उसके लिए, लास्ट टाइम भी ये बिल टेबल होने वाला था, लेकिन जो हम सब लोग ने स्ट्राइक किया, जो हम सब लोग ने धरना दिया, जो हम लोग ने यात्रा निकाली बैंक बचाओ देश बचाओ के लिए, उसकी वजह से वो बिल विंटर सेशन में नहीं टेबल हो पाया। लेकिन अभी वो लोग वापस मानसून सेशन में टेबल करने वाले हैं। तो ये हम सबका वापस जिम्मेदारी है कि हम इसको इतना पुरजोर तरीके से विरोध करें कि वो टेबल नहीं कर पाए। उसके अलावा सोशल मीडिया इज अ वेरी पोटेंशियल वेपन कॉमरेड्स, यूज इट so that you can make your voice reach, because unless you make this movement a public movement, हम नहीं बच पाएंगे comrades. See, I believe in talking very clearly. आज अगर हमको हमारी बैंक बचाना है या हमको किसी भी बैंक को बचाना है, because a threat to one is a threat to everyone. So अगर ये नेशनलाइजेशन एक्ट अमेंड नहीं होने देना है तो हमें सोशल मीडिया का पूरा यूज करना होगा। Our leaders are very active on Twitter, they are very active on Facebook, on YouTube. We have our Bihar unit YouTube channel, we have our Bank Bachao Desh Bachao Facebook page, we have our Twitter handles. So kindly follow, tweet, like, share, because it hardly takes few minutes to do that. And if we don't do that, we don't have the moral right to question why privatization is happening or what is happening. यहाँ में ये कुछ नहीं मिला है. If you cannot spare 5 minutes of your day sitting at home and at least contributing on Facebook and Twitter, you don't have the moral right. Comrades, I'll not take more time, but just a friendly advice to each one of you. COVID is again knocking at the door, especially in Mumbai, Pune and other places. Be safe wherever you are working. जिस भी environment में काम कर रहे हैं, सही से करिए, खुद का ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, क्योंकि एक कहावत है कि जान है तो जहान है. Yes, comrades. जब पिछले कोविड में जब सब बंद था, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, सब इवन गवर्नमेंट ऑफिसेस, ओनली ब्रांचेस वर ओपन, बैंक ब्रांचेस वर ओपन एंड वी वर प्रोवाइडिंग सर्विस. दिस टाइम ऑल्सो आई एम श्योर कि अगर कुछ होता है, बीइंग एसेंशियल सर्विस ड्यूटी, हमको सर्विस देनी होगी, तो जब दे रहे हैं नेशन के लिए तो प्रोटेक्शन के साथ दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिए. एंड once again I urge all the comrades to stay united, because Pune is known for militancy. We have seen it in freedom struggle. History है पुणे का. हमारे महाराष्ट्र के नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. सो हमारा राइट है टू हैव अ प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस, टू हैव अ गुड लाइफ, तो हम उसको मेंटेन करेंगे ही. With this, once again, I wish the entire executive committee of Pune unit heartiest congratulations for their successful 41st annual general body meeting, and I express my thanks and gratitude on behalf of entire Mumbai Goa unit and AIBOC Maharashtra State 1. Thank you, comrades. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bank of India. Thank you, Nilesh sir, and thank you for sharing the new version of 5 C's with us. I am very sure that all our comrade colleagues will follow it in their day-to-day operations. Moving ahead with the session, I would request our President and GS Pune unit to felicitate Sanjay Das sir on the superannuation. Sir has been recently superannuated in month of May. पुणेरी पगड़ी से हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं.
behalf of Pune unit, I'm wishing you happy, healthy and contented retired life. Even though he's retired from services, he's active association में तो federation as well as Thank you. I would now request Sanjay Das sir to please come ahead and address our comrade colleagues, and Sunil Kumar sir will be addressing after him. Good afternoon, friends. Your worthy president, Comrade N.C. Prabhudesai, your worthy general secretary, Comrade Babu Madhurji, our general secretary of the Rajasthan unit, Comrade Mahesh, my younger brother and a leader of the future day in the banking industry, Comrade Nilesh, Sri Vijay Kumar ji in absentia, Sri Damodaran Sahab in absentia, P. Augustine, the general manager, my friend, philosopher and guide, Comrade Sunil ji, Comrade Ganesh, Comrade Rajesh ji, Comrade Ashish Tikale, Bikram and others, those who are in the arms of our federation, my dear friends and colleagues, brothers and sisters, those who are present over here to attend your 41st annual General Body meeting of the Pune unit, I convey my thanks and gratitude, love and affection, honor and respect from my personal behalf, on behalf of Federation, on behalf of my unit, that is the Bank of India Officers Association Eastern India Branches Unit, and All India Nationalist Bank Officers Federation. You know, this time on 27th of June, the strike call given by the United Forum of Bank Unions, and at the same time, the second largest officers organization, that is the AINBF, they have also given this strike call. And you might be knowing this All India Nationalist Bank Federations, Officers Federations, it is the organization for the indomitable spirit of that organization, our second option for the pension, it came into being. And friends, while I will not stretch my deliberation because due to the AC not working, many of you are in discomfort, but within 10 minutes I will try to touch upon the things which I want to touch. A lot many things have been said by the earlier speakers, Sri Vijay Kumar ji and Sri Damodaran ji. It is our food for thought, and definitely they have touched upon some of the issues which are haunting us. Definitely, friends, at present we are walking on a tightrope between the salvation and the collapse. वो जो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि अंधेरा बहुत है जमाने में, अंधेरा बहुत है, अब सूरज किसी हालत में निकालनी चाहिए और मौसम बदलना चाहिए, और चेहरा जो हर रोज बदलते हैं उसका जनाजा धूम से निकालना चाहिए. तो फ्रेंड्स, this is the time we ought to think about our real threat. To me, this privatization, it is not only the threat for me, because they have touched upon and they have given us some food for thought that yes, the complete abolition of the banking industry, it is in the minds of the government, and the way forward they are maintaining, that is in that direction. Because you know, there is the more and more dependence on this contractual labor. There is more and more dependence on this
our alternate delivery channel. There is more and more dependence on NBFCs. There are more and more dependence on the FinMin companies. Outsourcing has become a style in our bank also. This outsourcing, like other banks, the State Bank, they were the pioneer in introducing this outsourcing. And in our bank also the tenure of this outsourcing is 2 years or 3 years. And nowadays throughout the country, one movement is going on against this outsourcing for these 4 years. Yes, in the days to come, definitely, it will create a big problem for the young generation. The government should think about to protect this young generation. They are the precious asset of the country. And in our country, the average age of the countrymen is 25 to 35. And this average percentage of this 25 to 35, it is more than 65%. Therefore, this country will move forward only if the government is thinking about the protection of the youth. We are not against the reforms. हम लोग reforms का विरोध नहीं करते हैं. But in our country, the reform is labor dispersing. The reform is not labor intensive. It should be labor intensive. In a country like India, where the unemployment percentage is more than 9%, more and more job is to be created, but we are moving in a different direction, that more and more people, they are being the jobless. And this Niti Aayog chairman, Amitabh Kant, 2-3 years back, he told that by 2022 and 2023, there will be no brick and mortar banking. If there is no brick and mortar banking, then these people, those who are serving, those with lot many aspirations and hopes, they have joined in this banking industry. Where they will go? We are not thinking in that line, friends. Therefore, we ought to think in that line, because sometimes we cannot understand what is the writings on the walls. That's why people are not taking it so seriously. Simply by making propaganda, simply by making the social campaign very big one, it will not serve the purpose. The young people, they will have to come to the road to make their future protected. And these trade unions, there are very few trade unions left in this country who can think about in that line. And we are very proud that our Federation of the Bank of India Officers Association is such an organization who can think about the future of the young generations. Because they are the precious asset of this country. In our bank also, our executives, they should take care of this precious asset of our banking industry. Every time, whenever I am talking to my executives, I am telling them, sir, they are the precious asset. Don't convert them into our liabilities. Give them some sort of motivation. Give them some sort of inspiration. Only because by telling you are a worthless person, you cannot achieve the target, it will not suffice. The person who is not achieving the target, it means not that he is not putting his hard labor. He is also putting his hard labor. But tomorrow, it may seem that the person who could not achieve the target, he has made justice to this banking industry. Because only achieving the target, they will be a very good banker. They will have a pat on their back. They will receive their clappings in the managers' conference. But tomorrow, if these accounts turn bad, then what will be the situation? And this Vijay Kumarji, he was very happy with, he should have a pat on his back, because in his bank, the employees, they are getting 15 days of salary towards the PLI. But in our bank, for the last 2 consecutive years, we didn't get the PLI. But it is not your fault, because the net profit of this Bank of India, it is one of the miracle one. Your net profit grew by 66%.
But as because there is no incremental year-to-year growth in the operating profit due to provisions and all the things which is not in your hand, your operating profit year-to-year growth was not there. And as because the PLI is linked to this operating profit, this time for the last 2 consecutive years, we were out of this PLI. This year, next year, definitely there should be an endeavor on our part that we should ensure that we will get the PLI. But this time, we are to put our endeavor much more than whatever we put in the last 2 years, because this year CRR has increased in the deposits also. There are increased interest rate, therefore the interest outgo, it will be much more than the last 2 years. Therefore, you will have to put forth your best endeavor for the aggressive financing. And whenever you are going for the aggressive financing, you should be very much cautious so that you are not being put into the net of the disciplinary proceedings. Therefore, we should be very much cautious in that aspect. And at the same time, we should tell the truth. We should not show only the rosy picture, because a trade union leader, it is the duty of a trade union leader to make the people acquainted with what is the true scenario, what is the true writings on the walls. Only then the employees can raise their voice. Only then the employees can be motivated and they can be energized, they can be rejuvenated. Yes, friends, definitely we will work for this bank to ensure our PLI, to ensure the next year also the profit, both in the operating profit year-to-year growth and net profit year-to-year growth. At the same time, we have to take care of our work-life balance. It is the first and foremost thing to take care of our work-life balance, because tomorrow we do not know in the monsoon session what will happen, but we cannot be simply onlookers. Whatever the fight, whatever the protest we are putting forth, that is not sufficient. And I cannot cater in that idea that the government is invincible and the government is mighty. That's why lot many things are coming every day. Every day you have seen, कभी कभी कुछ भी बोला जाता है, परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं है, मैं दूसरा बैंक के बारे में बोल रहा हूँ, your performance so far the NPA recovery is not good, that's why you will not get the salary. The ladies, those who are the pregnant, they will be treated as temporarily unfit. जो मन में आता है वो बोल देता है. It is not due to the fact that the government is mighty. It is due to the fact that we have become the weak. हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं, हम लोग सिर्फ कोई एकाध कैंपेन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, but we are not taking care of the real challenges in our heart. Friends, we have to take care of the real challenges in our heart. मैं अगर ये सब बोलूंगा तो मेरे को कोई बोलेगा कि प्रोफेशनल पेसिमिस्ट, बोलेगा कि आंदोलनजीवी. बोलने दीजिए, मेरे को कुछ आता जाता नहीं है. शाखों से टूट जाए वो पत्ते हम नहीं हैं. आंधियों से कह दो कि अपने औकात में रहे. फाइट कीजिए. फाइट इज द ओनली सॉल्यूशन. फाइट इज द ओनली सॉल्यूशन. एंड नॉट ओनली योर लीडर्स विल फाइट, you will have to fight. Each and every individual during the work time, each and every individual is a fighter, each and every individual is the leader. Then only you can take forward your fight to a logical conclusion. And fight के लिए कोई प्लेटफॉर्म का जरूरत नहीं होता है. फाइट के लिए जो फाइटर जो फाइट जानते हैं, उसके लिए हर मैदान में वो लड़ाई लड़ सकते हैं. आज देख रहे हैं ना, अपना विरोधी पक्ष में तो बहुत लोग हैं, देश में तो बहुत कुछ हो रहा है, कोई चूचा भी नहीं कर रहे हैं.
लेकिन हमारे जो जुआ हल्ला बोल के नेता अनुपम को अरेस्ट कर लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, फाइट के लिए कोई प्लेटफॉर्म का जरूरत नहीं है, सिर्फ जज्बा होनी चाहिए, अपने आप में लड़ाई करने का जज्बा होनी चाहिए। फाइट कीजिए फ्रेंड्स, द यंग पीपल, यू हैव टू कम फॉरवर्ड टू टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर एंड एट द सेम टाइम to ensure the dignity, because the trade union is not all about your salary division. Trade union is not all about your benefits and all the things. Trade union was formed only to give the protection and to protect the dignity of the officers. That is the main thing as on today. So friends, with this I will not stretch my deliberation. At the last, I will give you one suggestion, that please take care of your family, because one thing, it is the saying of APJ Abul Kalam Azad, that love your profession, love your job, don't love the institution, because tomorrow your institution may stop loving you. But at the same time, tomorrow your job, whatever you will acquire the knowledge, it will give you the satisfaction. And therefore, we should be a knowledge worker. And in today's context, there is a reduced self-life of the knowledge. Whatever you are grasping as on today, tomorrow it will be an obsolete. Therefore, you have to keep yourself abreast to the situation, what is going on in and around. Lastly, I will give you that thing, means that is the work-life balance. Brian John, the CEO of Coca-Cola, it is known to everyone, but for the recapitulation I am telling you. The life is a game wherein we are playing with the 5 balls jogging out. 5 balls are work, friends, family, health and the spirit. Work, family, friends, health and the spirit. Only one ball that is made of glass, only that is of rubber, means that is the work. If you drop it down, it will bounce back to you. Means काम कभी छोड़ के आपको जाने वाला नहीं है. Work is a rubber ball. If you drop it, then it will bounce back to you. And other balls are made of glasses. If you drop it, it will be scrapped, it will be nicked, it will be shattered into pieces, and it cannot be retrieved. Therefore, take care of your family, take care of your friends, take care of your health, and take care of your spirit. With this, I wish all the success of your 41st annual General Body meeting, and hope that definitely this Bank of India, the star of the Bank of India, it is glow like anything, and it will be the stand-alone bank. It will not be touched by some other bank. It will remain like a Bank of India, India's only bank, as because the name itself says that there is no suffix and prefix. It is the Bank of India, and it is the only bank which was formed in 1906. This is the first bank with a pan-India vision. It was formed in our country. It was not formed by any particular group of any particular religion, any particular community, any particular persons from any particular region. Means almost all the banks, just like this Canara Bank, it was promoted by Kamath Group. The Syndicate Bank, it was promoted by Chettias Group. Punjab National Bank, it was formed by Lala Lajpat Rai. Bank of Baroda, name itself says the Baroda. Bank of Maharashtra, it is the Maharashtra. Allahabad Bank, the name itself says that it is for a particular group or particular people. And this bank was formed by a group of people coming from different religions. Our first MD, he was Sasanjay David, he was a Baghdadi Jewish. And Nuruddin Muhammad Nuruddin, he was a Muslim. Kawasi Jahangir, he was a Parsi. Lalubhai Samaldas, he was a Hindu.
and almost from all the communities, they came forward to form a bank, Bank of India. Therefore, you should have a pat on your back that you have joined in this bank with this pan-India vision, and this Bank of India will remain like anything. The star will glow like anything. Wish you all the success. Thank you very much. Inqilab Jindabad, Bank of India Officers Association, Pune Unit Jindabad, and Federation of the Bank of India Officers Association Jindabad. Thank you. थैंक यू कॉमरेड संजय दास। अभी यहाँ 2 फेलिसिटेशंस होंगे। हमारे पुणे यूनिट के ट्रेजरर कॉमरेड राजू पाटिल जी, जो मई महीने में रिटायर्ड हो गए हैं, उनको मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ। मैं हमारे सुनील कुमार जी से अनुरोध करती हूँ कि उनको शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ देके उनका सत्कार करें। एंड Deputy Zonal Manager Upkari sir wants to felicitate Sunil Kumar ji. That will happen next. सुनील कुमार सर, आप प्लीज़ यहीं रुकिए। उपकारी से उनको करना है सर। हाँ, डेप्यूटी जोनल मैनेजर उपकारी सर सुनील कुमार सर का सत्कार कर रहे हैं। चिड़िया चोच भर ले गई, नदी नो घटियो नीर, दान दिए धन न घटे, कह गए भक्त कबीर। दान जो होता है वो ज्ञान का भी होता है। आज हमारे साथ जो ज्ञान के गुरु बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा ज्ञान जिनको है, सुनील कुमार जी है। उनको मैं आमंत्रित करती हूँ और उनको कहती हूँ कि उनके जो ज्ञान का घट है उसे थोड़ा सा रिक्त कीजिए और हमारा घट भर दीजिए। आइए सर। सर्वप्रथम मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, और मैं खुश भी हूँ कि आपको गर्म करने की ज़रूरत किसी को नहीं है। नमस्कार। मंचासीन भाई प्रभु, आपकी इकाई के और इस सभा के अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष भाई संजय जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट, नाउ वी हैव ए प्रेसिडेंट हु विल वर्क, कॉमरेड नीलेश पवार जी, इन एब्सेंसिया मेरे बड़े भाई कॉमरेड नीलम दामोदरन जी, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो ट्रेड यूनियन बैकग्राउंड था, वो इनबॉक में प्रेसिडेंट थे, स्टेट प्रेसिडेंट थे। इन एब्सेंसिया हमारे बहुत अच्छे मित्र, मेरा भाई श्री AB विजय कुमार जी, कार्यपालक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मेरे दोस्त और NBG वेस्ट 2 के प्रतिनिधि, हमारे संगठन के भी प्रतिनिधि भाई अगस्टिन जी, आज के इस सभा के रचयिता भाई बाबूलाल मधुर जी, राजस्थान इकाई के महासचिव भाई महेश, मंच के उस तरफ बैठे हमारे कार्यपालक गण, हमारे अजीज दोस्त
इस इकाई के पूर्व के अध्यक्ष भाई कट्टी, राजेश जी हमारे फेडरेशन के पूर्व कोषाध्यक्ष, अभी वह हमारे सेक्रेटरी हैं टेंगरी जी, और दोस्तों, आज इस सभा का बहुत ही बड़ा महत्व रहा। आपने देखा होगा आप में से कई लोगों को, और मुझे आज तक वो ऐसा कोई भी वाकया याद नहीं है, क्योंकि मुंबई में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो वहाँ 3-4 ईडी लोग अपना आते हैं, बैठते हैं। पिछली बार भी आया तो कई लोग यहाँ से गए हुए थे, उन लोगों ने देखा कि मैडम ने बहुत सारे सवाल पूछ डाले, मैडम मोनिका कालिया ने। अब विश्वास करिए मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। आज जो यहाँ कार्यपालक गण थे, आपने देखा होगा कि उन लोगों ने जो बातें की, आपने शायद गौर फरमाया होगा। और दोस्तों, विजय कुमार जी का वो कमिटमेंट रहा है कि वो व्यक्ति 2006 में ही वॉज माई प्रोटोकॉल ऑफिसर, संगठन में वो उस लेवल पे वो आदमी, मैं बड़ा नहीं हो गया, बड़प्पन उस आदमी में थी। When he was the zonal manager of the Kerala, जब मैं गया, उस आदमी ने एयरपोर्ट पे मेरा सामान नहीं उठाने दिया। That was his greatness. He was so much attached to the organization. जब वो CBO हुए कॉर्पोरेशन बैंक के, तो एज ए CBO he had to play a very new role. और उनके लिए भी शायद ये लगता था कि ये डिसिप्लिनरी मैटर की मुझे बहुत जानकारी है, तो पहुंच गया पटना। फिर कॉर्पोरेशन बैंक के लोगों ने मुझे कहा कि भाई वो आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बोले मेरे मित्र हैं, हम जरूर उनसे मिलेंगे। मैंने उनको फ़ोन किया, बोला मैं गाड़ी भेजता हूँ, होटल बैठते हैं। बोले नहीं, ये काम मैंने कभी नहीं किया। जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे कॉमरेड हैं, वो मुझसे मेरे फेडरेशन ऑफिस में आके मिल लें, मेरे यूनिट के ऑफिस में आके मिल लें। मैं कभी होटल नहीं जाता, कभी मैं एयरपोर्ट नहीं जाता। ये उसूल मैंने ज़िंदगी में बना के रखा। जो कार्यपालक हैं उनके लिए मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, और फेडरेशन ऑफिस में या किसी यूनिट ऑफिस में काम करने वाला एक चपरासी भी आएगा तो स्टेशन पे 5 घंटे खड़ा हो जाऊंगा। भाई गणेश जी और राजेश जी थे, और इस व्यक्ति का कमिटमेंट देखिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ही कैन बी ए रोल मॉडल फॉर मोस्ट ऑफ यू। जिस व्यक्ति के अंदर से ट्रेड यूनियन के लिए जो फीलिंग निकल रही थी, शायद आप लोगों ने उस वाइब को महसूस किया होगा। ही केम विथ ए बिग लिस्ट, मेरे को इतने डाउट्स क्लियर कर दें। बैठो ना मित्र, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आपके जितने भी सवाल हैं उसके जवाब मेरे पास हैं। फिर अपने गेस्ट हाउस लेके गया, इनको खाना खिलाया। ये वहां से जब ग्रामीण बैंक के चेयरमैन हुए, दैट आई वाज मेंशनिंग यस्टरडे अगेंस्ट देयर, तो ये कुछ भी ग्रामीण बैंक में नया करते थे तो पहले मेरे पास भेटिंग के लिए भेजते थे। देखिए, मैं एक बात जरूर आपको बताऊं कि वो भी उनका बड़प्पन था। आई एम वेरी मेडिकेट पर्सन विथ वेरी मीडियोकर इंटेलेक्ट और IQ। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें आप लोगों का IQ तो और भी कम है कि आपने मेरे जैसे व्यक्ति को इतने दिनों से बर्दाश्त कर रखा है। तो आपकी गलती ज़्यादा है, मेरी गलती कम है। हम तो जैसे हैं वैसे हैं। Yesterday when I went, I just wanted that I should meet him and I should invite here, and the kind of inputs which he has given, I have learnt many things and most of you might have learnt. Today's dash was very rich. दामोदरन साहब ने कहा, ये सही बात है कि दामोदरन साहब ने कुछ कठोर बातें कह दी थी और मैं उनसे लड़ गया। Because I always believe in telling the things at your face. Because self-respect is prime thing for me. बैंक 6 महीने सैलरी नहीं देगा तब भी चलेगा। अगर एक क्षण भी सेल्फ रेस्पेक्ट बैंक ले लेगा तो नहीं चलेगा।
मैं बहुत डर गया। उसके बाद त्रिपाठी जी, अशोक पई और ये लोग गए, बोले दामोदरन साहब बहुत ही नाराज हैं आपसे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा ह्यूमिलेशन कभी नहीं देखा। हम बोले आप लोग छोड़ दीजिए। That was between me and him. There he was executive director and I was general secretary of the Federation of Bank of India Officer Associations. After that, there will be a very good personal relationship. And as the luck would have it, हमने अपने एक जनरल मैनेजर को डिफेंड किया हेड ऑफिस में। when later on he became ED of some bank, he was the inquiring authority, and that was the turning point of our relationship. मेरी उनसे बहुत सारी बातें हुई और दामोदरन साहब का बॉडी लैंग्वेज दैट वाज टेलिंग लॉट ऑफ थिंग्स. Even when he had told somebody else to suspend, and when I talked to him, she should not be suspended. उन्होंने कहा अभी बोला है तो मैं क्या करूं? बोले अपने सेक्रेटरी को बोलिए, वो बोल देगा दोनों इधर. And that general manager was exonerated honorably, and then he became the executive director of some other bank. So that was the kind of relationship which we had been maintaining by keeping our self-respect intact. आज भी रिश्ते वही हैं. वो उनका काम था, ये मेरा काम है. अगस्टिन मेरा काम नहीं करेंगे, मैं इनका काम नहीं करूंगा. अभी मैं जब पूना में आया तो मुझे एक चीज की जानकारी मिली, समथिंग अबाउट दिस कोल्हापुर, which I am not going to elaborate. I had to talk to MD. MD ने कहा, कार्तिकेय साहब का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा. हम बोले हाँ, that is the shocking thing that he uttered like that. Then what do I do? बोले what you should have done, that you are doing right now. You have conveyed it to me, now you forget, the rest of the things will be duly taken care of. And such a wonderful team when working in the NBG. Unfortunately, due to not so good on the performance metric, our NBG West 2 general manager, my very good friend, and the zonal manager Pune, my younger brother, Comrade Biswal, they had gone to head office for a meeting on the performance metrics. Those NBGs or those zones who had not been able to perform up to the expectation of the top management, they have been called, they will be counseled, they will be given some inputs, there will be some exchange of thoughts also, that what was the reason that we could not do well in certain particular area. It was a nice meeting, wonderful meeting, and through Comrade Sebastian and Milind, I would like to extend my thanks and gratitude, love and affection to the entire management of the NBG West 2 and all of you, my dear friends. It was very kind that Biswal came to me, then I was talking. He was also AGS of our Odisha unit at one point of time. We had been doing the trade union together. And Madhur was very forthright, because generally what happens, we keep mum. When he was telling me something, when he asked, then he was telling, it was done by me. Then Madhur told, सर को झूठ नहीं बोलिए, नहीं तो मैं सच बता दूंगा. Yes, of course, it was very cordial talks between the friends. और एक चीज मेरा ये मानना है कि अगर मैं आपको गाली देता हूँ, आपको मैं फायर करता हूँ, that is my incompetence, which I reflect. I'll be very harsh to you when the matter of discipline will come. I cannot tolerate indiscipline, because I am also very disciplined a person. You all are educated persons. You all are very educated, highly educated, I must say.
कम से कम आप 27 तारीख को जब आंदोलन करोगे तो ना पत्थर फेंकोगे ना आग लगाओगे। आई हैव फुल फेथ इन यू, यू आर सो एजुकेटेड ए पर्सन। आप कोई भी वैसा काम नहीं करोगे जो गैर कानूनी है, और अगर कहीं कुछ वैसा होता है तो देन इट इज माई ड्यूटी दैट आई शुड काउंसिल यू एज बीइंग द हेड ऑफ योर फैमिली। अदरवाइज ऑल्सो आई वांटेड टू ग्रीट you, those who are married and those who are having kids। तो जो पिता हैं उनको सभी को फादर्स डे है ना आज, तो फादर्स डे की ढेर सारी बधाइयाँ, और लेडी काउंटर पार्ट्स को भी ढेर सारी बधाइयाँ। अगर वो नहीं होती तो आप फादर कैसे होते? तो इस मौके पे आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। नीलेश ने कहा कि शादी की बात कही, अगर बैंकों का निजीकरण हो जाएगा, लेट मी कम टू द पॉइंट, और हम नहीं लड़ेंगे। हम नहीं लड़ेंगे का मतलब क्या है? जब भी मैं ये बात बोलता हूं कि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो मुझे गिल्टी कंसाइंस होता है। डिस्पाइट आवर 15% और 20% फोर्स सीन ऑन द स्ट्रीट, वी आर द मैक्सिमम क्राउड पुलर्स फॉर एनी एजिटेशन। बैंक ऑफ इंडिया का भी वो स्ट्रेंथ 15% ही रोड पे दिखता है, और उतना ही में लगता है कि इतना बड़ा क्राउड हो गया, चूंकि बाकी बैंक के लोग नहीं दिखते। दे हैव एक्सेप्टेड इट एज ए फेट अकम्पली। आपने कम से कम है कि आप में से कुछ लोगों के अंदर ये मादा है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। कहते ना कि मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, छूटी है किसके हाथ से तलवार देखना। और पार्टिकुलरली ये तो डेक्कन, इंटायर डेक्कन प्लाटू मराठों का, महाराज शिवाजी के ये धरती है। अगर यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हो तो यहाँ से पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज जाना चाहिए कि लुक, हम उस वंश के वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। अलग बात थी कि वो लड़ाई हम अपनों ही की वजह से हार गए। मैं इतिहास के पन्नों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे चूंकि पूना की इतिहास की बहुत जानकारी है, पूना से मेरा बहुत गहरा लगाव रहा है। मेरा बड़ा वाला बेटा है एनडीए में था, तो मैं अक्सर आता जाता था, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। तो आज बैंक ऑफ इंडिया के लोग हैं, वो सिर्फ दिखते हैं, बाकी बैंक के लोग नहीं दिखते हैं। अगर बाकी बैंक के लोग अगर नहीं दिखते हैं और बैंक ऑफ इंडिया के लोग दिखते हैं, तो अभी शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा। Yesterday I was sharing it with my friends, few of my friends in the federation, they know कि मुंबई से मीटिंग के बाद मैं आया तो देखा 1 जोन में परफॉर्मेंस अंडरटेकिंग लिया जा रहा है जो बैंक ऑफ इंडिया में आज तक नहीं। I immediately called the zonal manager, was with the general manager, very good friend of mine since scale 3. Zonal manager, very good friend of Sanjata, Samir. I had the DJ. मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम? And then I sent one message. Anyhow, that message was not for MD. That message went to the MD. MD called the CGM HR and he told that you asked for the explanation from the concerned zonal manager and the general manager. I never wanted that thing should be escalated to that stage. I was quite capable of handling the situation, but I don't know how it went to the knowledge of MD. That is the kind of relationship which we are having with our top management. और सबसे बड़ी चीज है, ये विजय कुमार जी तो हमारे यहां से थे, दामोदरन साहब तो हमारे यहां से नहीं थे। When they had owned the bank and they had been working for the welfare of the bank, we are from the bank. मैंने आप लोगों को कई बार कहा है दोस्तों कि 1984 में when I joined this bank as a probationary officer, और आप बुरा नहीं मानिएगा और बुरा मानिएगा भी, तो ऐसा थोड़ा कि मेरा कुछ कर दीजिएगा। जो बात खड़ी है वो होनी चाहिए। उस समय बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर होना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस समय के जो लोग थे और 90s में जो लोग आए,
उन लोगों ने ये देखा होगा कि कितनी बड़ी बात हुआ करती थी. We used to be the number one bank. With the passage of time, we faced so many challenges, and all the time we came out from that situation. कल ही मैं किसी को बता रहा था सर कि मैं और दीनबंधु महापात्रा जी हमारा दोनों एक ही रीजन में ज्वाइन किए. आई वॉज बिट सीनियर टू हिम. आई ज्वाइंड इन जनवरी. दैट टाइम दिस ज्वाइनिंग वॉज कमिंग एज पर योर स्टैंडिंग इन दी BSRB लिस्ट. बैचेज आते थे. ही वॉज फ्रॉम द नेक्स्ट बैच, बट वी ज्वाइंड इन द सेम रीजन. वी वर्क टुगेदर फॉर क्वाइट ए लॉन्गर टाइम. And when he came back to the Bank of India at that time, at least he could generate the vibration which was missing. Thereafter also we went to PCA, but all the time organization stood. अभी संजय कॉमरेड संजय ने कहा, नीलेश ने कहा, ये PLI का मुझे कोई गम नहीं है. मुझे एक बात की खुशी है कि आपने ये देखा होगा कि आपके बैंक ने डिविडेंड डिक्लेयर किया. आप ये देखिए कि बैंकिंग इंडस्ट्री में कितने बैंकों ने डिविडेंड डिक्लेयर किया. और ये नहीं है, मतलब ये नहीं कि आपको 20% में कितना पैसा मिलेगा. मतलब ये है कि आपके कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया, एंड फॉर विच आई हैड ऑलवेज बीन टॉकिंग टू आवर MD and CEO. एंड टुडे आई वांट टू थैंक हिम फ्रॉम दिस पोडियम दैट एटलीस्ट ही कुड लिसन टू मी. आई वाज टेलिंग सर, यू आर द इन चार्ज ऑफ द ESPS. And I was the ambassador of the ESPS. I could persuade our members that they should contribute. Other organizations they were boycotting, but it was officers who contributed whatever money they had. Today you are having 50% of the price. You are in gross loss, but nobody has abused me. Nobody has abused bank. Because that shows your sense of belongingness, and whatever dividend you are going to get, that is just the acknowledgement of your loyalty which you have shown to this institution. And that is going to give confidence to your top management. ये संजय दा ने बिल्कुल ठीक कहा कि PLI दे दो और सैलरी रोक दो. यहाँ PLI भी मिलेगा और सैलरी भी मिलेगी. वर्क लाइफ बैलेंस भी होगा. वी आर नॉट द पर्सन्स हु विल प्ले फ्रॉम द गैलरी. हम कभी भी गैलरी से नहीं प्ले करते. ऑलवेज वी आर इन हैबिट ऑफ प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट. जनरली वी डू नॉट गो टू बैक फुट ऑल्सो. मैंने कहा कि 27 तारीख का हड़ताल होगा बैंक ऑफ इंडिया में, और बैंक ऑफ इंडिया में 27 तारीख का हड़ताल हर हड़ताल के जैसा उसी तरह सक्सेसफुल होगा. कुछ भी नहीं खुलने दूंगा. क्या हुआ? क्या खोलना है क्या? नहीं, आप लोग बोलिएगा तो मैं बोलूंगा सब चीज खुला रहेगा. वॉट एवर यू पीपल विल से दैट वी विल डू. तो कुछ भी नहीं खुलने दूंगा. लेकिन हमको तो अपने बैंक को भी देखना होगा. आई एम गोइंग टू सेंड ए मैसेज एंड थ्रू यू आई एम टेलिंग ओपनली. हम टॉप मैनेजमेंट को यही बोलेंगे कि जितने लोगों की जरूरत है उसको आप 26 तारीख को बुला लीजिए. यू कंपनसेट देम. इसलिए कि 27 को हम बैंक नहीं खुलने देंगे, और हमको अपने बैंक को भी बचाना है. वो है ना, बैंक बचाओ देश बचाओ का स्लोगन की जो बात चल रही थी. तो जब मेरा बैंक ही नहीं बचेगा तो हम लोग देश कैसे बचाएंगे? सो वी हैव टू सेव आवर इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, एंड वी हैव टू act as a soldier also when the fight will be there on 27th in the street. और फिर हम कोई पत्थर नहीं फेंकेंगे, कहीं किसी ट्रेन में आग नहीं लगाएंगे. Our demonstration will be peaceful. आज यूथ फोर्स की बात होती है. You see where the youth is going in this country. एक सोशल मीडिया में कोई चीज आ गया, बिना दिमाग लगाए हुए, बिना पढ़े लिखे हुजूम में शामिल हो गया. क्या हुआ? ये सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, प्राइवेटाइजेशन होगा तो, और नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी का हम विरोध करते हैं इसलिए कि राष्ट्र की संपत्ति हमको बचाना है, और एक छोटी सी बात पे उसको फूंके चले जा रहे हैं. Where the youth is going? Where is the application of mind? Why people are not coming forward?
People should come forward. You should have a guts to tell what is right, what is wrong. अभी क्या संजय दा ने अनुपम का नाम लिया. He is leading a very big youth wing. कल सुबह में मैं लोगों को बता रहा था कि मैं उसके लिए बेलड़ का व्यवस्था कर रहा था दिल्ली में. 8 आदमी मैंने ढूंढा कि 4 लोगों को 11 लोगों को बेल चाहिए था. मैंने कहा 4 का मैं जिम्मा लेता हूँ, बाकी का जिम्मा आप लोग ले लो. But I had been telling, don't abuse anybody by name. Don't abuse anybody, any party. You just oppose the policies. हम नॉन पॉलिटिकल हैं. अभी मैं आ रहा था तो मैंने कहा अपनी गाड़ी में लोगों को कि भाई आज मैंने एक बड़े आदमी को थोड़ा सा ट्रोल कर दिया. इसलिए ट्रोल कर दिया कि मैंने ये कहा आप ज्ञान किसको दे रहे हैं, आप हमको ज्ञान मत दीजिए, पहले आप ज्ञान ले लीजिए. इसलिए कि आप खड़ा हो रहे हैं और आपके सामने में चीज़ें जल रही हैं और आप लोगों को मना नहीं कर रहे हैं. वो संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है. आज दोस्तों क्या होने वाला, कोरोना के पीरियड से अपना देश उभर रहा था. वी वेर कमिंग बैक टू द रेल्स. अभी नीलेश ने कहा कि हमको सारा प्रिकॉशंस लेना है, तो हम भी पॉकेट में मास्क लेके प्रिकॉशन लिए हुए. फिर वी आर गोइंग. जब मुझे लगा कि मैं जिनके लिए आया हूं, जब उसमें से किसी ने भी मास्क नहीं लगाया तो मैंने धीरे से पॉकेट में रख लिया. क्या करूंगा, वो मोबाइल पे जाके और वो जो स्माइली होता है उसमें मास्क वाला दबा दूंगा. आजकल बहुत सारा चीज वैसी होता है. तो कोरोना के पीरियड से जब ये देश उभर रहा था तो ये झूठ मूठ के आंदोलन खड़े हो गए. ये राष्ट्रद्रोह है, यह आंदोलन नहीं है. आज गरीबों को उनके स्टेशन पर खोमचे जला दिए गए, ठेले जला दिया गया. आज उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा इसकी चिंता किसी को नहीं. अगर हम ट्रेड यूनियन करते हैं तो हमको वर्किंग क्लास के लिए ये फीलिंग होना चाहिए. हम कुछ नहीं कर सकते, हम लिख तो सकते हैं, आवाज़ तो उठा सकते हैं, हम लिखेंगे भी, आवाज़ भी उठाएंगे, जहाँ बोलना होगा बोलेंगे भी. तो मैंने कहा अनुपम के जो लोग बाहर थे, मैंने कहा ये सब चीज़ें लिखना बंद करो. उस दिन मेरे पास परसों रूम में बैठे हुए थे, प्रमोद भी बैठा हुआ था, बाकी लोग बैठे हुए थे. मैंने ट्राइबल्स का ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा ये है उन लोगों का, दे हैव गॉट गुड इम्पैक्ट. मैंने फ़ोन करके कहा ये चीज़ नहीं लिखी आप, वरना मेरे जैसे लोग, हम लोगों के जैसे लोग आपसे अलग हो जाएंगे. लेट अस बिहेव लाइक रिस्पॉन्सिबल फेलो. दामोदर साहब ने कहा सोशल मीडिया की बात है. नीलेश ने आप लोग को सोशल मीडिया का पावर बताया, 2000 दी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. नीलेश हमेशा वो उसका उदाहरण अक्षय खन्ना का उदाहरण देता है. पता नहीं क्यों नाराज था, अक्षय खन्ना का नाम इसने नहीं लिया था, नहीं लिया ना, ठीक किया. बार बार उसी के नाम क्यों लेना. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको फर्स्ट वी हैव टू सेट राइट आवर होम. ट्रेड यूनियन तो चलता रहेगा, वो हुआ. PLI कैसे हुआ, नीलेश नोज. गवर्नमेंट वाज एडामेंट दैट वाज नेट प्रॉफिट. आई सिंगल हैंडेडली आई मेड इट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. 15% और 5%. वो मिट्टी का हांडी बचा रहेगा तो दही तो कभी भी जम जाएगा, हांडी ही नहीं रहेगा तो दही कैसे जमेगा. I was not thinking in terms of Bank of India only. I was thinking in terms of the banking industry. Whatever achievement he was telling, he had been party to it, or Sanjay had been party to it. They had been watching. जिन दिनों हमारा बैंक PCA में था उस दिन भी किसी का एक पैसा कटा नहीं और जो भी चीज़ मिलना था वो मिलता रहा. ये बैंक हमारे लिए कामधेनु है, तो इस बैंक को तो हमको रखना पड़ेगा ना स्वस्थ. और उसके लिए जरूरी है कि हम एक बैलेंस बना करके चलें. वर्क लाइफ बैलेंस की बात संजय दा ने किया. सभी पार्टिकुलरली जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो 5 days वीक के लिए दे आर क्रेजी अबाउट द 5 days वीक. We can achieve the 5 days week, provided you all come in the street, at least 50% of you. On the strike day, I can promise that 5 days week you will get. लेकिन आपको क्या है, आप तो उसी दिन जिस दिन स्ट्राइक का दिन है, किसी को ब्यूटी पार्लर जाना है, किसी को मौसी के एनिवर्सरी में जाना है, किसी को मामा के
वो उसमें जाना है, किसी को सैंडल खरीदना है, किसी को जूता खरीदना है, वो सारे काम उसी दिन आ जाएंगे। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। ये कहा जाता है ना कि सबको लड़ने पड़े थे अपने अपने युद्ध, सबको लड़ने पड़े थे अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। आपकी लड़ाई तो दूसरा नहीं लड़ेगा, कोई वो पार्टी नहीं लड़ने वाली, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ने वाली। दामोदर साहब ने कहा संजय दा को कि आप वेस्ट बंगाल से आए हैं, दीदी। दीदी का मतलब आप लोग समझ गए मैं किसके विषय बोल रहा हूं? किसी ने समझा क्या? किसी ने समझा क्या? संजय दा के अलावा ममता बनर्जी इंटरनेशनल, बहन जी मायावती, वो सब अपना अपना नाम है। तो दीदी की यह स्थिति थी कि कोई जय श्री राम बोले तो पत्थर लेके दौड़ती थी। वो पत्थर लेके दौड़ती थी। वो बोला क्यों? लेकिन उसी कैलकाटा शहर में जहां 3 बैंकों के हेडक्वार्टर थे, 2 बैंकों का हेडक्वार्टर विलोप हो गया, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। इलाहाबाद बैंक, ए बैंक विच took its birth in 1865, 1865 का बैंक एक झटके में खत्म हो गया और दीदी ने कुछ नहीं किया। यूनाइटेड बैंक खत्म हो गया, दीदी ने कुछ भी नहीं किया। बाद में पत्थर चलाने वाली दीदी, उनको बैंक से क्या लेना देना? ये पॉलिटिकल पार्टी की हिपोक्रेसी है। 5 फरवरी को राहुल गांधी से मिलने के लिए गए हम लोग 5 आदमी। कुछ लोगों ने फोटो देखा होगा, नीलेश के पास वो फोटोग्राफ आज भी है, क्योंकि भी इसी से मांग लेते हैं। जब हम लोग गए मिलने के लिए, दैट वाज द 50th ईयर ऑफ द नेशनलाइजेशन। वो आए, उनके साथ मोतीलाल बोरा जी थे। अब बेचारे नहीं रहे तो सारे इल्जाम उन्हीं पे लग रहे हैं। तो मोतीलाल बोरा जी थे, मनीष तिवारी थे, सुरजेवाला थे और 3-4 लोग थे। वो आ गए, हम लोग सभी लोग खड़े हो गए, वो भी खड़े हो गए। सुमोदा ने एक्सप्लेन करना शुरू किया, हम रिप्रेजेंटेशन बना के गए थे। योर ग्रैंड मदर नेशनलाइज द बैंक, दैट वाज ए हिस्टोरिक डिसीजन वे बैक इन 1969। जब तक बात खत्म नहीं हुई, उन्होंने कहा व्हाई इट वाज नेशनलाइज्ड। फिर लोगों ने समझाया, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, दिस रेवोल्यूशन, दैट रेवोल्यूशन, पॉवर्टी एलिविएशन, सारी चीज समझा दी। बोले देन व्हाट आई हैव टू डू। फिर ये कहा गया कि आप अपने लोगों को बोले कि पार्लियामेंट में जब गवर्नमेंट इस बिल को लेके आई, देखिए ये हो सकता है इसका स्ट्रीमिंग हो रहा हो, कुछ भी हो रहा, मैं जो बात बोल रहा हूं मैं तथ्यों पर आधारित बात बोल रहा हूं और मैं कोई भी बात कभी भी वापस नहीं लूंगा। तो तथ्यों पर आधारित ये बात मैं आपको बोल रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्या करना होगा? हम लोगों ने कहा आप अपने एमपीज को बोलिए कि वो लोकसभा में, राज्यसभा में इसका विरोध करेंगे। ओके, उसके 3rd डे मैनिफेस्टो आया कांग्रेस पार्टी का। उसके मैनिफेस्टो के 8th पॉइंट में बैंकों का प्राइवेटाइजेशन वाज वन ऑफ द इशू। आप कोई भी आदमी मैनिफेस्टो उठाइए और पढ़ लीजिए, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल आपके युद्ध हैं। जब राजा राम या भगवान बुद्ध लड़ते रहे अपने युद्ध, तो आपका युद्ध कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। सपने आपके हैं तो सपने आप पूरे करिए ना। आपके सपने हम कैसे पूरे करें? यहाँ मंच पर बैठे हुए हम हुए, संजय हुए, अगस्टिन हुए, प्रभु हुए या मधुर हुए, तेरा चांद सितारों का वादा करने का जिस दिन था शायद हमने भी किया होगा। लेके क्या जाते हैं? घर में जाते हैं तो यही सुनते हैं किसी काम के नहीं है। शायद ही कोई बैंकर होगा वैसा जिसकी पत्नी ये नहीं बोलती होगी कि हाँ क्यों आप किसी काम के नहीं हैं। अगर नहीं बोलती है तो सतर्क हो जाइए, मामला कुछ गड़बड़। हमारी पहचान हुई। हम लोग कभी भी ये फोटो ग्रुप कर लेके नहीं जाते, बोलता है कि सब पागल है, सब वहां बैठा रहता है क्या।
if you would not have been there, such a huge employment would not have been there. मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता सिर्फ 50% बाहर निकलिए, 50% को छोड़ दीजिए, जिनकी तबीयत खराब है उनको छोड़ दीजिए, जो मैटरनिटी में है उनको छोड़ दीजिए, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। नीलेश ने कहा ये LTC के लिए दोनों का, अभी ट्रांसफर में तो एक नई समस्या आ रही है ना, मैं हमेशा ट्रांसफर में रहता हूँ। आज स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर हुआ, अगले साल डाइवोर्स हो गया, फिर अब दूसरा स्पाउस हो गया। अब लिखा हुआ ट्रांसफर पॉलिसी में कि भाई एक बार होगा, अब पता चला 4 साल में 4 बार हो गया। अब ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो पानी पी पी के हमको गाली दिए जा रहे हैं। कल मुझे इतनी गाली पड़ रही थी जब मैं आपके पास जा रहा था, आपके ऑफिस, फिर मैंने वो गणेश को फोन पकड़ाया, राजेश जी को फोन पकड़ाया, भाई इसको रिप्लाई दीजिए कुछ। जिस लेडी की शादी के 3-4 साल हुए होंगे, अब वो लिख रही है भाई मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा मैं पूना में हूँ, बोले मैं पल पल मर रही हूँ, आप जल्दी आइए। अरे भाई मैं जाके क्या करूँगा। मैंने कहा गणेश को, क्यों तुम्हारा मित्र है यार, उसको समझा, जो भी मामला है उसको सल्टा। Why I am telling you all these things? Please try to be honest to your relationship and accept the truth. सबको सब कुछ मिलता नहीं जहां में। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये थोड़ा है कि 5 बजे झोला उठाया घर चले गए। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि एक बैलेंस होने चाहिए आपके डोमेस्टिक फ्रंट पे, आपके वहां। वो कहते हैं ना, ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है। उसी से दूर बैठे हैं जिसके लिए पैसा कमाना है। खुश है कि घर से फोन आया है और गम है कि अपनी खैरियत बताना है। बहुत सारे लोग अपने घर से दूर हैं, अब सुबह निकलते हैं, शाम में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाते हैं। यस, यू हैव द प्रॉब्लम, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप नहीं जाएंगे तो उनको खिलाएंगे क्या, आपके सपनों का क्या होगा। आप जिस तरह का लाइफ उनके लिए सोच रही हैं, अपने बच्चों के लिए, या सोच रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आप कैसे दे पाएंगे। इसलिए बावजूद इसके बच्चे रो रहे हैं, आया को, दादी को। और अब तो वो भी सिस्टम नहीं है, जो फैमिली इतनी छोटी हो गई कि फैमिली का डेफिनेशन ही बदल गया। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लॉट ऑफ पीपल वे टेकिंग केयर, उसके बाद फैमिली का डेफिनेशन बदला। फैमिली का डेफिनेशन ये हो गया कि हस्बैंड वाइफ बच्चे। अभी सिंगल पेरेंट का सिस्टम शुरू हो गया। उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप का वो पैदा हो गया। अभी तो गुजरात में आपने देखा कि लड़की ने लड़की अपने ही से खुद से शादी कर ली। अब पता नहीं फैमिली का डेफिनेशन क्या होगा। अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गया। आप आया के बहाने क्रेच में बच्चों को छोड़ते हैं, आप उनका बचपना उनसे छीन रहे हैं। कल को वो बच्चे आपके साथ कभी भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा। जिस दिन आपको जरूरत होगी वो बच्चे आपको छोड़ेंगे। दिस इज अ डेंजर। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, आप उसको अच्छी तालीम दें, उसका अच्छा लालन पालन हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है आप बताइए। आप में से कोई बता सकते हैं? नहीं, मैंने पहले ही कहा था सवाल नहीं पूछूंगा। मैडम को इस बार देखा इतना सवाल पूछते हुए कि मैं डर गया कि भाई नहीं, पोडियम पर से उतना सवाल नहीं पूछना। तो मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूँगा कि आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। उसके लिए सबसे पहला जरूरी है कि आपका संगठन रहे। ताली बजाइए। और संगठन तभी रहेगा जब बैंक रहेगा। जोरदार ताली बजाइए। ये हुआ वर्क लाइफ बैलेंस। सूरत ऐसी बने कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। हम आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, लेकिन लड़ने वाला तो सामने होना चाहिए। किससे लड़ेंगे? जब बैंक ही नहीं रहेगा तो लड़ेंगे किससे? हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेवारी है। अगर आप लोगों ने इस बात को गांठ पार लिया कि आप जहां भी हैं बैंक के लिए बस 2 कदम, मैं ये नहीं बोलता हूं कि बैंक के लिए जान दे देना है। अभी किसी ने कहा था जान देने की बात।
हमको तो समझ नहीं आता किसकी जान कहाँ अटकी पड़ी है, वो खुद उसको मालूम नहीं। एक जान और 100 दुश्मन है। कल बड़ा मैंने हमको ये लगा, मेरे एक मित्र ने जो बैंक में ऊंचे ओहदे पे, वो उन्होंने कहा, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं ओबीएस रीजन से, वो रिटेल का बीसी होता रहता है और मैं उसमें हूँ, तब तक उधर से आता है कि वो सीएमसी का बीसी आ गया। हेड ऑफिस में लोगों को मालूम नहीं है कि एक बीसी में वो अटका हुआ है, फिर दूसरा बीसी तैयार है। कहाँ वर्क लाइफ बैलेंस होगा, कहाँ होगा? आप जिसको जोनल मैनेजर बना के रखे हो, जिसको जनरल मैनेजर बना के रखे हो, कम से कम उसको प्रायोरिटी तो डिसाइड करने को। आप उस पर भरोसा नहीं है, मत रखो, छोड़ दो उसको। वैसे इस बैंक में बहुत लोग वैसे ही जी लेते हैं, बिना कुछ किए हुए गाली उली दे के घर चले गए। मुझे याद है कि मैं उन दिनों बोर्ड रूम में जब सेंट्रल कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग हुआ करता था, हालांकि मैं जोकिंगली बोलता था, आप लोग उसको सीरियसली नहीं लीजिए, कि मैंने उस समय एमडी को कहा, उस समय हमारे 3 ईडी हुआ करते थे, शंकर नारायण जी, दामोदरन साहब और ये अभी जो हमारे एमडी हैं। मैं बोलता था कि मैं वैसे लोगों को जानता हूँ जो हेड ऑफिस आते हैं और कलम नहीं खोलते, कभी आपके पास गए, कभी उनके पास गए, कभी उनके पास गए, उन्होंने सबको खुश रखा और वो घर चले जाते हैं। और अगर आप मुझसे नाम पूछेंगे तो मैं यहाँ पे नाम बताऊंगा, लेकिन हर बार मैं अपने दोस्त परशुराम पांडा का नाम नहीं बोलूंगा। मैं ये भी बोलता हूं, तो वैसे लोगों का चल जाएगा, लेकिन आपका इतना लंबा भविष्य कब चलेगा? कहां जाएंगे आप? स्थिति बहुत भयावह है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको एहसास करा रहा हूं। ये सरकार, आप अगर उठा के देखें बहुत नज़दीक से, बहुत बारीकी से आकलन करें, ये सरकार जनरली चीज़ों को रोल बैक नहीं करती है। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि फार्मर्स बिल पे फार्मर्स के सामने ये सरकार झुक गई, इसलिए फार्मर्स का बजा दिया। तो बहुत नज़दीक से आप एनालिसिस करके देखिए, रिफॉर्म्स धीरे धीरे पुश हो रहा। सबसे पहले संगठन को तोड़ा, और यूपी इलेक्शन में आप लोगों ने देख लिया, लोग कहता था कि एक फार्मर्स आंदोलन की वजह से यूपी इलेक्शन में गया। हर व्यक्ति वो नया पैजामा कुर्ता मेरे जैसा ही तो मजदूर का दिया हुआ है, यहाँ दिया, सिला के बैठा हुआ है कि मैं मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहा हूँ। सारे के धरे रह गए, जिसको जितना था वो इलेक्शन जीत गया। तो वो गवर्नमेंट ने वहाँ भी पाँव पैसे नहीं खींचा। और सबसे बड़ी बात है कि उस नेता से हमेशा डरिए जो कुछ नहीं बोलता। बोलने वाला बोल दिया चला जाएगा, मेरे जैसा व्यक्ति बोल दिया मन में कुछ नहीं लेके जाएगा। मोदी जी वैसे नहीं है, वो कभी कुछ बोलते ही नहीं, वो करते जाते हैं, और बोलेंगे नहीं कर देंगे और विदेश चले जाएंगे। फार्म बिल इधर आ जाएगा, वो चले जाएंगे। और फार्म बिल में दोस्तों आपको ये बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मेरे पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं कुछ, मैं कभी उनको यूज़ नहीं किया और न करूँगा। ये नूरा कुश्ती होती है संसद में, ये जानते हुए भी कि स्ट्रेंथ के आधार पर यह सरकार इस बिल को पास करा लेगी। विपक्ष वाले हंगामा करते हैं, अगर सरकार उस दिन नहीं भी पास कराने की स्थिति में होगी तो उनको कुछ इंसेंटिव देती है। जैसे अभी होता नहीं, अभी हम लोग पे आउट देने लगे हैं हर कंपनी को, 10% हम देंगे तो कोई 20% दे रहा है, क्या बैंकिंग होगी। एक समय एलिगेशन लगता था कि डीलर से हमारे लोग पैसा लेते हैं, आज हमारे लोग पैसा देने जाते हैं डीलर को तो कोई एलिगेशन नहीं लगता। कहां से कहां बैंकिंग पहुंच गया। तो वहां क्या होता है कि उसको कहा जाता है बाइकआउट करिए, प्रेस वाले को हम बाहर बुला दिए, आप लोग चिल्लाइए, ये सरकार निकम्मी है, ये है वो है, फलाना है ढेमका, इधर बिल पास हो जाएगा, फिर आपका जो भी चीज होगा वो पास हो जाएगा। आज भी जहाँ वो उज्ज्वला योजना, निर्जला योजना, कौन कौन सा योजना है जहाँ सब्सिडी की बात है, 7 states आर बियरिंग द लोड ऑफ द इनकम टैक्स ऑफ द MLAs, MPs। वो हमारे और आपसे के टैक्स से जो लिए गए पैसे हैं, और आज भी इतना कम करने के बावजूद
दे आर हैविंग एवरीथिंग सब्सिडाइज्ड। क्यों? सरकार जिसको चलाना है वो तो अपने चलाएगा ना, उसको मालूम है फार्मूला, इनको इतना दे दो, इनकी इतनी ही औकात है, इतना में ही चुप, इसलिए वो आएगा। अगर आज तक वो नहीं आया है तो आपके संगठन की शक्ति की वजह से, आपके संघर्ष की वजह से नहीं आया। आप लोगों को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि अभी तक आप लोगों ने टाल के रखा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये गुजारिश करूंगा, मैं ये गुजारिश आप लोगों से जरूर करूंगा कि आगे आने वाला समय बहुत कठिन है। थोड़ा निकलिए। प्रभु देसाई ने कहा कि बी विद द लीडर टिल यू बिकम ए लीडर। यस, यू बिकम ए लीडर, यू विल गेट द फॉलोअर्स। है ना, अकेले चले थे मंजिले जानिब, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। यू वर्क फॉर द राइट कॉज, इवन इफ यू हैव टू वॉक अलोन, द राइट पीपल विल फॉलो यू समडे। आज बाकी जगह जो इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन की स्थिति है वह भी बहुत भयावह। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे के पहले आप घर नहीं जा सकते। आपके यहाँ ये बात नहीं। आपके यहाँ बैठने के 2 कारण हो गए। 2 कारण ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ 2 तरह के लोग, एक वो हैं जो 10 से 5 में अपना सारा काम करते हैं, दे आर मैनेजिंग देयर टाइम वेरी वेल, और टाइम मैनेजमेंट इज एन आर्ट दैट एवरीबॉडी शुड नो। दूसरा वो लोग हैं जो दिन के उजाले में कोई काम कर ही नहीं सकते, वो जैसे जैसे अंधेरा होगा वो अचानक एक्टिव हो जाएंगे, फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई देगी। मैंने फड़फड़ाने की मतलब मैंने पंख फड़फड़ाने की बात नहीं की, पेपर फड़फड़ाने की बात। आप लोग उससे मत समझ लीजिए जो कि रात में उड़ने लगता है जिससे अंधेरा होता है। वो बैठे रहेंगे ऑफिस में, दे विल बी यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक फॉर जीरो प्रोडक्टिविटी। उनको क्या है कि बॉस को कैसे पता चलेगा कि मैं इतना देर तक बैठता हूं। बॉस 9 बजे निकलेंगे, तब वो 9 बजे अचानक वो भी तैयार होंगे, वो 9:30 बजे जाएंगे। हर रास्ते वो टेंशन में जाएंगे, और सब्जी लाना था सब्जी नहीं लाए, ये करना था ये नहीं किया। घर में जाएंगे तो पत्नी ये बोलेगी वो बोलेगी, फलाना है ढिमका है, लेकिन वो वही काम करेंगे। आप किसके साथ न्याय कर रहे हैं? नाइदर यू आर रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर नॉर यू आर रिस्पॉन्सिबल वर्कर। Responsibility never comes lopsided. It will always come in full. Loyalty never comes lopsided. ये कोई नहीं कह सकता कि मैं आपसे 40% लॉयल हूँ, आपका 60% अनलॉयल। लॉयलिटी विल कम फुल। आप निश्चित समय में अपना काम करिए और घर जाइए। आप ये क्यों कहते हैं कि हाँ हमको रेगुलेटेड वर्किंग आवर चाहिए? आप कहते क्यों हैं? आप बताइए कि आपके किस रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि आपको वर्किंग आवर के बाद काम करना है? कोई भी आदमी हमको दिखा देना, इतना पढ़ा लिखा बात है। मैं अपने मित्र अगस्टिन जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं कानून की किताब में लिखा हो तो मुझे ज़रूर इनलाइटन करेंगे। काम ख़त्म करिए, जाइए। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी बात जानते हैं कि ट्रेड यूनियन में मैं भाई एक्सीडेंट आ गया। मैं तो कभी क्लास में मॉनिटर भी नहीं था। यहाँ पर खड़ा होकर लोग बोलते हैं मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, मैं कुछ नहीं था। ओनली देयर वाज वन इशू कि मैं 10 से 5, 10:30 से 5:30 के बाद काम नहीं करूँगा। राजेश जी उस समय जोनल ऑफिस में हुआ करते थे। जोनल मैनेजर ने कहा आप नहीं काम करेंगे। मेरी 2.5 महीने की नौकरी थी। मैंने कहा नहीं करूँगा ना, और 7 साल बचे हुए थे अभी। सोचा कि यहाँ से नहीं तो कहीं और नौकरी कर लूँगा। उन्होंने कहा क्यों? हम बोले सर वो गेट पे लिखा हुआ है 5:30 बजे वर्किंग आवर है। बोला अभी इसका ट्रांसफ़र करो। तो मेरा ट्रांसफ़र पटना से खगौल हुआ तो मैं चला गया। कि जिस दिन आप ट्रांसफ़र से डरने लगे, आप ये मान के चलिए कि आपका उसी दिन मौत शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई। डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनी ट्रांसफ़र। यू गो वेयर एवर बैंक सेंड्स यू। आई एम टेलिंग माई लीडर्स ऑल्सो, the day you start compromising with your comfort, you are sacrificing the comforts of the members. Please don't do it. आप जहाँ भी हो वहीं से ट्रेड यूनियन करते रहो, आपकी इज्जत भी होगी। क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, ये रिक्शा ठेला वालों का नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होगा, सब आपस में भाई भाई।
थोड़ी देर के लिए आप किसी के सेंटिमेंट को इवोक कर लीजिएगा, बाद में वो समझ जाएगा where I am landing, where I am going, what is the use of my education, what is the use of my upbringing. ये जरूर है कि आज की जो जनरेशन है, दे वांट एवरीथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। हम लोगों के समय क्या होता था, 7 साल के बाद हम एलिजिबल होते थे प्रमोशन के लिए, और हर साल प्रमोशन का टेस्ट नहीं होगा। तो जिसमें मैं था और दिन मंजू थे, उस बैच का 8 साल के एंड में रिजल्ट आया 1 to 2 का। आज क्या है, प्रोबेशन पीरियड में 1 से 2 हो गया। वो एक्सपोजर नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज वर्कर नहीं है। पता चला कार्बाइड से पके हुए फल के जैसे हैं, 2 महीने के बाद सड़ गए। दैट एक्सपीरियंस, दैट एक्सपर्टाइज is also one of the factors, and that's why while discussing the promotion policy, the organization had given suggestion that at least it should be 4 years so that people can learn. आप नॉलेज वर्कर बनिए, आप चीज़ों को सीखिए। और एक चीज़ मैं आपको, चूँकि अभी कितना टाइम बचा, हाँ नहीं, अभी इन लोगों से पूछ लेते ना, कितना देर तक आप लोग मेरे को झेल सकते हो? बोलिए, क्या हुआ? पूरा बोले? तो बोल दिया, फिर बार बार रिपीट क्यों करूँ यार? वैसे ही इन लोगों को वैसे ही डरा रहा था मैं। आई विल टेक 5 minutes मोर। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि आप नॉलेज वर्कर बनिए, नॉलेज इज द पावर। विजय कुमार जी ने जब कहा कि वो अकाउंटेबिलिटी की पॉलिसी बनी, तो अकाउंटेबिलिटी की पॉलिसी में MD राव जी, ही वॉज द कन्वेनर फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। EIBSO के रिप्रेजेंट करने की जो कमेटी बनी थी, उसमें मैं भी था। यू लुक हाउ द रिलेशनशिप वर्क्स। इन्होंने मुझे कहा, बॉस मैं उस कमेटी में हूं, आपको जो भी कहना हो आप मुझे भेज दीजिए, मेरे पास वो इनपुट होगा, आई विल ट्राई टू मेक इट माई ओन ऑब्जर्वेशन। क्योंकि ट्रेड यूनियन कभी भी कोई सजेशन देगा तो लोग उसको शक की नज़र से देखता है, लगता है वो एक टेंडेंसी है लोगों की, शक की नज़र से देखेगा, जहर तुरंत खा लेगा। दारू की प्योरिटी कोई नहीं नापेगा, दूध का लैक्टोमीटर लगा देगा, ये टेंडेंसी है। मैंने कहा कि अगर आप ये IOB में, वो इस समय थे कॉर्पोरेशन बैंक से IOB में चले गए थे, आई एम सेंडिंग 1% टू यू। एंड लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रेड यूनियन में ही लोगों को वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है एक दूसरे की। मैंने AIBOA के जनरल सेक्रेटरी को भेजा है, पर्सन हु इज वेल वर्स्ट विद दैट। अभी मेरे ऐसे ही संगठन में पता चलता, लोग बोलता उनको भेजने की ज़रूरत क्या है? अरे भैया, अपॉर्चुनिटी मुझे मिला और वो आदमी वहीं स्टेशन है, एंड ही इज़ क्वाइट ए नॉलेजेबल पर्सन। मैंने उनको बोला आप IOB चले जाना, क्या है नागा तुम्हारे पास जाने का, मैं टैक्सी ले लूँगा। अच्छा छोड़, अपने घर का लोकेशन भेज दे। मैंने विजय कुमार जी को लोकेशन भेजा, विजय कुमार जी ने गाड़ी भेजी, गाड़ी भेज के बुलाया, 2 घंटा बैठा, सारा पेपर दिया, और जब डिस्कशन हुआ तो आई वॉज रिप्रेजेंटिंग दी AIBOC, सो आई न्यू मेनी थिंग्स एंड वी कुड कंट्रीब्यूट। नाउ ऑल दीज थिंग्स आई कैनॉट टेल एवरीवेयर। That is how the relationship we are having in Bank of India. ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप लोग ये मान के चलो कि आप लोग जो भी हो बहुत भाग्यशाली हो कि बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक में हो। अच्छे बुरे दिन तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं। Now we are emerging. थोड़ा सा हम जोर लगा देंगे, we will keep our star shining. और जब हमने बैंक ज्वाइन किया था तो उस समय जो स्लोगन था, कल मैं NBG ऑफिस में भी बोल रहा था, यू हैव ए स्टार इन, यू हैव ए फ्यूचर इन दिस स्टार। बाद में वो बदल गया, बैंक दैट केयर्स, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग वगैरह वगैरह। नाउ अगेन दोज डेज हैज कम बैक, द साइकिल इज कंप्लीट। यू ऑल विल हैव योर फ्यूचर इन दिस स्टार। नाउ यू सिक्योर योर फ्यूचर, मेक दिस स्टार शाइनिंग, bring back the glory and get back the fruits of your commitment
your attachment with this bank, your loyalty, your power. Tomorrow you all will be catapulted to the higher positions in the banking industry. फिर भी उसके लिए वही बात कहूँगा कि ये जरूरी है कि बैंक रहना चाहिए। बाद बाकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो भी डिमांड्स है, आपके जो भी एस्पिरेशंस हैं, एज ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्ट कमिटी ऑफ दिस नेक्स्ट बाइपार्टाइट सेटलमेंट, आई एम fully aware of your aspirations and I will try to push it in that charter of demand, जो 9th joint note होगा उसके charter of demand में. When I am going to Mumbai or IBA, Nilesh is always with me, he is available to me, many things he knows. अभी वो इतना चीज सीख गया है कि वो मेरे को किसी दिन खिसका देगा और अपने बन जाएगा. Because your friends are your potential enemies, तो हम भी बहुत ज़्यादा गार्डेड रखते हैं अपने आप को. आपको लंगी वही मारेगा जो आपके साथ चल रहा हो, जो दूर बैठा हो कभी आपको गिराने का प्रयास नहीं करेगा. दिस इज एप्लीकेबल इन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ ऑल्सो. बी अवेयर ऑफ सच एलिमेंट्स दैट आई हैड टोल्ड जोकिंगली. सो Nilesh is there. Nilesh will be many things he is coordinating. Rather I am sending him to IBA with gift. You go and you have your independent relationship with them. Maybe that certain time we may need the people working there. तो अभी क्या है, IBA में हम जाएंगे तो हमको कोई नहीं पहचानेगा, सब ये समझेगा नीलेश के साथ कोई आया है. But everybody knows Nilesh. 8th joint note के समय में जितना झंझट हुआ, कोरोना का पीरियड था, I am indeed very thankful to Nilesh and the entire team of Mumbai and Goa who had been making my stay there very comfortable. And many things we had been getting. I am indeed very thankful to our top management also, and through the persons who are sitting in the dais. Perhaps you do not know, when I was sitting, I received a message from MD and CEO in certain points. I reciprocated to him also. Such is the bondage. We all are prepared to sail together. For outreach program he had been to Patna. Other day the CGM gave me a call. अरे वो बोल रहे हैं MD साहब कि आपने उनको इतना मोटिवेट कर दिया, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं किया. When he called the trade union organization to meet, I said I am not coming. All the time I am with you and I don't have any demand as such. Your concern is our concern. And I am not going to give you any lip services. This I will do, that I will do. Let me go back to my boys. मैं जैसे ही अपने लड़कों के पास वापस जाऊंगा, वो चाहे लाख नाराजगी हो, किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ हो, किसी का कुछ नहीं हुआ हो, कभी किसी को मैंने कुछ कह दिया हो, जैसे ही मैं उसके पास जाऊंगा वो सब चीज भूल जाएगा. That is my earning that I have earned. So whatever you have to do, you do, and rest you leave for us. We will be doing, and we are doing it also, I tell you, my dear friends. So twice I sat with the GM. I was telling about one review meeting also where I had been, and I told certain things the GM was not knowing. So we are part and parcel of the management, very rightly Nilesh said. आप जैसे ही बैंक में कदम रखे ऑफिसर के रूप में, यू आर द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड, एंड यू आर द बॉस ऑल्सो टू द पीपल वर्किंग डाउन द लाइन. Multiple role you have to play. So thank you very much, my dear friends, for giving me a very patient listening. मेरी बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि ये बैंक रहना चाहिए, हम और आप रहने चाहिए. आप बार बार हमको बुलाइए, हम बार बार आएंगे. और ये सर्दी गर्मी तो चलते रहती है, एसी खराब हो गया तो क्या हुआ? आपका जज्बात, आपके अंदर का जो स्पार्क है वो जिंदा रहना चाहिए. हम तो कहीं भी खड़े हो जाएंगे, हम कहीं भी मिल लेंगे. इसलिए कि खून पसीने की कमाई जब हम घर वापस जाते हैं, अपने परिवार को प्रस्फुट करते हुए देखते हैं, तो हमको लगता है यस वी हैव डन. आप बहुत ट्राइंग टाइम में ही
कुछ अच्छा कर सकते हैं जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो। इसलिए आप लोगों ने इतना वक्त दिया, इतने ध्यान से सुना, और आप तमाम लोगों ने इस बात के लिए मुझे आश्वस्त किया है कि जब 27 तारीख को हड़ताल होगा तो सभी ऑफिसेज, सभी कार्यालय बंद रहेंगे ना मित्र। और डेमोन्स्ट्रेशन के समय you all will rally behind all your leaders. With this I wish your 41st annual general body meeting to be a grand success, which is already successful. As I was told that it was concluded in the morning, but even then belated my best wishes to them. आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। 30 जून के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप 30 जून को अगर आपने वो कर दिखाया जिसकी सबों को अपेक्षा है, मुझे विशेष करके मुझे, तो जैसा संजय ने कहा, जैसा नीलेश ने कहा, अगले साल आपको PLI भी मिलेगा, आपकी सैलरी भी नहीं कटेगी और कोई डांटेगा भी नहीं, कभी भी कोई नहीं डांटेगा। आप समय से घर जाओगे, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। दिस एश्योरेंस आई एम गिविंग यू ऑन बिहाफ ऑफ अगस्टिन हु इज सिटिंग हियर, और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी माय डियर फ्रेंड्स who are the executives of the bank. Thank you very much, my dear friends. Long live our unity. जय हिंद, वंदे मातरम, बैंक ऑफ इंडिया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कॉम्रेड्स, कोणी जायचं नाही, 5 मिनटं अजून राहिलेली आहेत फक्त. प्लीज वेट फॉर 5 minutes. आय एम हिअर टू conclude the meeting. Today, Bank of India officers of Pune unit is holding this 41st annual general body meeting. For that, our dignitaries on the dais, of the dais, have made it a point to attend this meeting. जैसे सुनील सर ने अभी बताया, उनका जो एड्रेस होता है वो सुनने के लिए सब बाहर से लोग अंदर आए। सुनील सर ने बताया वो कितना केयर करते हैं अपने मेंबर्स का। डे बिफोर यस्टरडे व्हेन वी इन्फॉर्म हिम समथिंग हैपेंड इन कोल्हापुर, ह्यूमिलिएशन, immediately talk to the higher ups including MD, and he ensured that this thing will not repeat in future. Comrades, under the leadership of Comrade Sunil Kumar, this federation and units of this federation are working very strongly in the interest of the members. At unit level also, we are taking care of all our members. As the General Secretary of Bank of India Office of Pune unit, I definitely assure you that whenever there will be the injustice with the member or officers in 5 zones of my unit, Pune, Solapur, Kolhapur, Ratnagiri and Nasik, wherever there is a problem, your General Secretary, your committee members will be definitely come to your help, and we will ensure that this type of injustice will not be repeated, or for that we will go to any extent. जैसे अभी सुनील सर ने बोला कि कल वो सर बात कर रहे थे, वो उनको लगा कि अभी सुनील सर से बात कर रहे तो मडूर जी चुप बैठेंगे। मैंने उनको सीधा बोला, सर यहाँ बैठ के झूठ नहीं बोलने का है। आप सुनील सर को बोल रहे हैं, ठीक है, जो सच्चाई है वही बोलिए, झूठ नहीं बोलने का। क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि मैं कुछ तो भी मेरा साइलेंस हो, इट इज अज्यूम दैट आई एम एग्री विद हिज आर्गूमेंट्स। तो अभी पुणे यूनिट में थोड़ा, पुणे जोन में थोड़ा चल रहा है, आफ्टर इशूइंग दोज 17 मेमोज एंड ऑल दोज थिंग्स एंड द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड बाय द फॉर द मेंबर्स, डेफिनेटली I am taking care, and I ensure that it will be taken care. आप सभी के मैं भरोसा जरूर दिलाता हूँ कि जब तक मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, इस यूनिट के सभी हम मेंबर्स हैं, हम में सब वननेस है, और कोई भी
अथॉरिटी आपको एब्यूज नहीं करेगी। हम डिग्निटी चाहते हैं। आप काम के लिए जैसे सुनील सर ने बोला, आपको गुस्सा करना, आपको तो कुछ गलती के लिए बोलना जरूर हक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसल्ट करें। तो विद दिस एश्योरेंसेस आई रिक्वेस्ट यू टू रिमेन विद द लीडरशिप, क्योंकि फेडरेशन लीडरशिप इतना स्ट्रांग है। अभी नीलेश है, संजय दा है, ऑल आर वर्किंग विथ यूनिटी एंड गेट टुगेदरनेस। मैं आपको यही भरोसा करूंगा कि लीडरशिप के साथ रहिए, एसोसिएशन के साथ रहिए। आपके बुरे काम में सिर्फ एसोसिएशन काम में आता है, कोई भी मैनेजमेंट का आदमी नहीं आता है। मुझे फ़ोन करके बोलते उसको एडमिट किया, जरा जाके देखो। उनके पास गाड़ी है, बैंक का ड्राइवर है, फिर भी मुझे फ़ोन करके बोलते वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको जाके देखो। ये फैक्ट्स है। तो आपके किसी भी काम में एसोसिएशन काम में आएगी, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। और एसोसिएशन के हर एक कॉल के साथ आप रहिए। हम किसी भी गलत काम के लिए हम आपका यूज़ नहीं करेंगे। मेरे बेनिफिट के लिए मैं आपका यूज़ नहीं करूँगा। सिर्फ आपके इंजस्टिस के लिए, आपके डिग्निटी के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। मुझे इंसल्ट करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे एक मेंबर को इंसल्ट करें तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो विद दिस यू माइट बी एक्सपीरियंसिंग कि मुझे कोई भी अगर ऐसा कोई इम्यूनेशन बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, और मैं उस अथॉरिटी तक तो जाता ही जाता हूँ। वो बुरा लगे, कुछ भी लगे, मैं जाता हूँ। तो आज के इस एजीएम के लिए संजय दा कलकत्ता से आए, सुनील कुमार जी, दिस टाइम वी आर वेरी फॉर्चुनेट। सो सिंस लास्ट 2 days सुनील कुमार इज़ विथ अस। कल बिजनेस प्रमोशन काउंसिल मीटिंग थी एनबीजी ऑफिस में, जो फर्स्ट टाइम जो बैंक ने दिसंबर में जो एक इंट्रोड्यूस किया अपने फेडरेशन की डिमांड से, उसकी फर्स्ट मीटिंग कल थी। तो सुनील कुमार जी के साथ 3 दिन रहने का मौका मिला। बहुत से उनके जो एक्सपीरियंस है उन्होंने शेयर किए। हमने भी हमारे यूनिट में जो भी चल रहा है उसका एक्सपीरियंस किया और उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे चल रहा है। एंड ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स। सुनील जी पटना से आए। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट नीलेश भी मुंबई से आए। महेश मीना राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी, वो भी यहाँ पे पधारे हैं। अभी द एग्जीक्यूटिव्स सिटिंग इन द फ्रंट रो, आवर डीजीएम ऑडिट बोगा साहब, आवर डीजीएम एनबीजी मिस्टर मिलिंद गौसानी जी, डीजीएम एलसीबी श्री माड़ी साहब, डिप्टी जोनल मैनेजर्स, एजीएम विजिलेंस श्री बाबुल साहब, फेडरेशन ट्रेजर गणेश जी, कॉमरेड राजेश जी, मिस्टर आशीष टेकाड़े प्रेसिडेंट विदर्भा जोन, all my committee members, and the topmost and most my energy, all you members. I thank you for coming this venue and attending this 41st AGB and making it a grand success. अभी मैं इस हॉल के जो MIT कॉलेज है उनका मैनेजमेंट का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है उनका भी मैं, आज का ये जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है लिंक दिया है। अपने बैंक ऑफ इंडिया के जो भी ऑफिस बेरर्स दूसरे यूनिट में बैठे हैं वो भी इसको लाइव देख रहे हैं। आप सभी को मैं इस फॉर अटेंडिंग दिस AGM, आई थैंक यू ऑल। I thank you all the dignitaries on the dais, of the dais. I request you that lunch arrangement is made in that canteen. आप सब उसका हमारे एज पर आवर शेड्यूल 3 बजने तक का हमने शेड्यूल किया था। दिस मीटिंग विल कंक्लूड बाय 3 o'clock. Accordingly 2:55 is there. मीटिंग आप समय पे हो गया। एंड I particularly thank Pune people who joined early in the morning. So this time and today the highest number of officers have joined this meeting. It is more than 900. Today around 900 officers have attended this meeting. This is the highest number ever this unit have seen. तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अभी राष्ट्रगीत होगा और इसके बाद एक कार्यक्रम खत्म हो जाएगा।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, जाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, भारत माता की। भोजन का प्रबंध किया है, आप सभी लोग भोजन लेके ही जाइए। कैंटीन में है ये, प्रीमाइसेस में नहीं, इट्स देयर नियर द डोर।